Hi, Gopal Chinmay. My apologies. I don't know how it got disconnected. I have reconnected once again. Okay, no issues. Thanks. Okay. Indra, we can start then. Hey guys, good morning everybody. Can you guys hear me? Yes, we can. Okay, I was trying to speak up, but maybe there's some issue. You guys able to hear me at the time when I joined first time? No, not the first time. Okay. So I thought people were not joining and it was late today. Good. Lakshmi, have you provided all the recordings to them? I have to do it, Indra. I'm doing that right now. Okay, no worries. Thank you. Thanks. Okay, guys. So Gopal, how was yesterday's session? You guys got some practice also? Then after? Or that was the only time you did? That was the only time. Yeah, Other that's the things to reason. be done. Yeah, that is the reason I thought everybody let's do it there only. Okay. So there should be no questions till yesterday, right? Anything for report level or property? All fine so far? Yeah. Okay, we did it till here, till waterfall or scattered? Scatter. Bubble is not available in Power BI desktop. Available is just like scattered, you make it a size. Okay. Waterfall is also that much not available. It's there. You have a negative value and positive value. That's what it will come across. Let's do the map for you. So everybody has a city, state, those fields. Can you check with your data set, whichever you guys working? Check you have that, maybe country will do, if it is a country, state, city, and if you have sales like that. You have that? Can you please check the data set? Region, state, and city is there in that sales data set. Orders, returns, and users. No country? Country, I think it's not there. Wait, let me check. It is Country is only there. United States is there only. Only. Okay, but you have state? Yeah, state is there. Washington, New York, California. That you can use it. But need latitude, longitude. Not needed. Not needed. Not needed. Okay. Yeah. So officially, I'll show it and then you guys can work.
So did you guys save the yesterday's file or you have not? PBI, Power BI files. Yes, we have saved it. Hello. Yeah. No, Disconnection. No, there. no, I think it was. Why not showing my data? Okay. Product, customer has streets. So you can have map here and you also have one arc map. Where is that? That's one more map here. One is filler map, one is map, and one more map would be there. It's like ARC map, ARC map. Yeah, ArcGIS. That's the one. This is from our company, ArcGIS. So if I click this will talk about more from, this is a map where we'll talk about sales and all. This is a filler map. You can fill the map. There's a difference. So if I talk about a street here, guys, can you see? Street gonna be 2. So it has a data of North America. Can you see that, guys? Here. Yep. And if I go to the revenue and I put it either in size or if I put it in size, oh, that's what is coming up. So rather than street, you should take something else. Take a state. How does it sounds? Low system resources may impact your audio quality. I already closed everything, right?
Yes. Okay, can you see here? Yeah, we can see 3 dots. Why only 3? Because they have revenue. Yes, for these states. So I have state and their revenues. Tooltip, if you want revenues, revenue anyhow has been showing. Rather than tooltip revenue, you can say item sold. Makes sense, no? This much quantity you sold, right? So out of all the states, only 3 states are doing business. They have only the 3 states data so far. You can drill in. Fine. One thing which I would probably, you can drill in and drill out. Can you see this? World map, North Americas. In location, we can add only one state, is it, or one city or one country? Location field. Mm-hmm. Yeah, in this way, you have added only state, na? So Yes, you want what? Street? okay, we can. Can we add that more than one field in this particular? Or else we'll have to add lowest granularity. Yeah, you have hierarchy, no? You can have hierarchy. You see that hierarchies come up, no? Right? So Okay. Mm, You despite of created this, or it's just not put it, no? Just now I've done. If I remove the city, it will go to the state level. okay. I was not able to see that. I would like to show you. Yeah. You have size of bubble. Can you see that? You can go ahead, increase and decrease. Okay. This is called zoom button. Can you see? In case if you want a zoom button on your map, correct? Okay. Zoom button off, zoom button in. Auto zoom, you can say on and off. If I say off, it's still there. Off, on. And zoom button is on. So this looks a benefit when you want to zoom in and zoom out. You can use these buttons. Right. Now let's go for the other one. I'll have the same. So Yeah, Indra, can you help me with this? I'm not able to make it. which the one? way you made it. This current map only. Can I share my screen just? Sure. Yeah, my screen is visible, right? Yeah. So what you've given? You've given 3 layers. Added country, state and city, yeah. But like अभी मुझे states देखने हैं तो how do you ठीक say? है ना, ये drop down is there no? Below there's a drop Sorry? down. उसके बगल वाला. Before than This that. one hierarchy. अच्छा, Yeah. ये So वाला. put it there. Next level in hierarchy. Okay. Then one. Okay. This is 8. Okay. Click one more. Next is One more. Click one more. next level. Okay. Maybe then city there is nothing. But Data is not available or what is there? Zoom कीजिए ना आ जाएगा.
Go for zoom button. आ गया. Okay. हाँ. Okay. It's better you Okay. created hierarchies. Okay. Then Yeah. Just zoom. So zoom is there. Yeah. Zoom button. button. So, okay. Page. Yeah. Okay. Now I am seeing everything. Is it a country, state, city? All three I'm seeing, right? Yes. Okay. But So I logically, can make state in different color. Tell me. that you have to go to the layers and figure out. Now, what I'm saying is, if you have Mhm. data on what and who's looking that report, that is also important. Somebody is looking for on a country level or then state level and then city level. So you can have the hierarchy coming in, or you can have a drill through, or whichever way you want. Mostly Okay. people go for state level. Normally people go that. If you want to go for city level, then your city should be showing there. Map mein hierarchy, people would not like it. I have seen people going in hierarchy in the maps. Okay. If they want to do it, they can click it there. In case if they have to, they can go for a, I would say, drill through. Hierarchy can be also given, but you have to specify or you have to tell your customer that, okay, we have given you hierarchy. Okay. And where do we place the region in this? Would it be like if I put it at the top, then would it differentiate like east, west, north, south? No, that will not come. Region will not come. Okay. Reason is not data, right? East, west, north, south Yeah, is it is not. provided by you. It is not a see. Correct. I'll tell you one thing. You did ask a question, I think you or Gopal in the morning, that where is the latitude and longitude? So the moment you write the state, Right. that is what will happen. I don't know if you guys are aware. You know how GIS works? No, not me. Can I share my screen? Yeah, sure. Yes. This list option. See how the GIS is gonna work. Gopal, do you have idea? No. I've never worked with GIS. Okay, so GIS, what will happen? In GIS, they have separate data file. So what will happen? This is a blank map. Can you see at the back? Here. This is a blank map. You got it? So map is nothing, which is it's a blank, completely blank map. So if you can see these roads, these lines and all, what will come is now there's a separate data file. Now what are the data files are? Number one, they'll have country file, state file, city file, zip file. Now what do you understand by this? So when you say state, what will happen? All dimension master file. No, that is fine. Dimension is fine. Here there's no dimension. GIS में dimension नहीं होता. Simple master file होता है. All master file, no transaction. Yeah, this master file. Yeah, master file. So, Dimensions. so what will happen? The moment you saying state, it will go and find out the country or state. So let's say the country file has USA. And if your data is US, it will not come. You got it? So the moment if I put it here, now you don't have longitude and longitude. Lat long is not there here, right? And if I put a state of the location, what will happen? How come it's showing me all my states? State name and so that means I mean like this map. Simple answer is they have a data file, state data file, which they're matching this state name. Exactly. It's only the name. This map itself has their own data file, right? Yes. This way, which they are matching with the data which we are inserting. Until unless you put it here, you remove this,
Map is blank here. देखो ना. And what if there is spelling mistake in the file which we have created and not? So when you're writing Sorry? which file, the map file or your file? Hey, their file will always be correct, na? Our file might have a spelling mistake in state and city, maybe. हाँ तो गया फिर काम से. अच्छा. See, these are the days. Where is state? State. See. This is NY. Okay, NY can mean anything. No, not New York only. नहीं, but there उन लोग के data file में कैसे stored है? New York है, NY है. How do we know that? Okay, good question. So they'll have full name, they'll have short name, they'll have codes. ऐसा रहेगा. So NY आपका short name है, ये code है. It's lagging for me. Okay. So NY is your code or a short name. So CA will be everywhere CA only, right? Got it. City देख लीजिए. City is gonna be CA के अंदर ही city है. Mm-hmm. San Carlos is a CA city, right? They also have a zip. So if I may go here and I take this zip code, see, still works. Right. And what if the file name is different? Like in country, we have written nation, then? In country, you've written what? Nation. Nation. Yeah. Name of the column, you're saying? Name of the column, yes. That does not matter for me. See, it's a zip underscore code. Right? State, they may write province. Right? We don't have countries here. Where is the countries? We don't have. Okay. So the name of the column is irrelevant. We can have any name, but fine. the value inside is the one which is being mapped. Because that is what the map needs to know. So if this is the one, and if I take my revenues, where is that? Latitude, longitude. Search my zip code उठाते हैं. So I'll take my not straight. Fine. And then take my revenue as legend. Can you see that? So this is a fill map. Earlier was a normal map. Now here is a fill map. I mean, you're filling with the data. It is no bubble, no size. Okay. So that's one difference. It will work the same way. If you go here, the property, you'll have a data colors. That's not no dropping. Anything stuck. Force stuck. Yes, I think. Yeah. So data colors is there in case you want to put them, whichever color you feel like. Legend position करना है. Right. If I do a bottom center, this is okay, right? This. Map control, haven't have yet. Right, plus minus sign, zoom in, zoom out button.
Okay. Yeah, Indra, one thing. हाँ, If you take city will be also available in other countries with the same name. नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं ना, यूएस का सिटी इंडिया में कैसे रहेगा? So if you talk about that way, in fact, it's a good question. So when you're writing here, let's say you're taking this city. City also has a state, no, and zip code. So when you're showing it, they'll go to state and city also, no? So let's take out this. एक तो सिंगल मैपिंग रहेगा ही ना इनके डेटा में, which country city state चल पूरा they will have that mapping itself. पूरा ही पूरा ही मैपिंग मैपिंग रहेगा, राइट? देखो ना, हाँ, अभी आपने सिटी डाला है तो ये सिटी का, इफ यू गो टू द डेटा सी टू बिट, नो, आ गया ना इसको सिटी. See, can't see any city. हाँ, Can't see the dots. ठीक है. This has to be mapped, no? This is city only, no? What is? Does not. This is what? If you zoom in, this is city only, right? It is not showing any dots out over here. It's not a dot. It's a fill. It's a different map. It's a fill map. आपने इसके पहले जो लिया था वो मैप नॉर्मल मैप था, ये फिल मैप है, ये फिल करेगा. Okay, okay. You have to change the map at all, then you have to go this map. सिटी के आई थिंक बॉर्डर्स ऐसे डिफाइन नहीं रहते ना, इसलिए इज इट लाइक दैट, बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट सीइंग सिटी द वे वी आर सीइंग स्टेट. Dot one you're looking for, this is the dot for you. ठीक है, इसमें अगर आपको उसको जाना है, let's go for state. ठीक है, अभी आप इसके नीचे जाइए. डॉट्स तो यहाँ पे रेवेन्यू बता रहे हैं ना. Size. आई थिंक व्हाट वी आर सेइंग कि सिटी जैसे स्टेट का बॉर्डर है, एवरी स्टेट हैज सम बॉर्डर, लाइक दैट वे कैन वी सी सिटी कि दिस इज द सिटी एंड अक्रॉस दिस देन देयर इज दिस डॉट्स. Wait a minute. This is the city, no? ये सिटी में आ गया ना, zoom करना पड़ेगा. This is what you're saying. ये big, this is a city and there's a sales. So you want सिर्फ city दिखा है, right? And no state. Yeah, either will be, that can also be. City will be within the state only, right? Map में पूरा कैसे दिखाएगा? Now in this map we can also see cities are mapped to Europe also. Dude, where is city? These are not city, right? These are all countries. In Italy we have bubbles. That is fine. So when you move in, then you know which room. Correct? So you have to zoom in, no? तभी सेल्स दिखाएगा आपको. रोम का सिटी है और उसमें ये है. टॉप लेवल पे सिटी is also a state, no? See, this is correct. It is how you're looking at. It is showing on city level only, but your map is right now on a globe level, right, Gopal? Yeah. So but we need to restrict it to North America. Oh, you want to restrict to North America? Then filter करो ना. कौन सा सिटी में आपको करना है? Then North America is you have to go for country or state.
specific city में करना है, then you have to just put it. Okay, मेरे को सिर्फ इस city का चाहिए. I'll show you only. You have to restrict. You have to filter the data. You got it? Got it, but can I share my screen? Yeah, sure. That's only US only. This is only US country. Now when I put in on the map, it shows US also, and it shows for other countries also. Even though I put country, state, and city out here. So you're saying state and countries not belong to US? No, it should ideally it should show only for this country, Right. US, because the data is for US only. आप एक काम करें, city and province हटाइए. Okay. Then what I think you're saying, Gopal, See, country is US only, so it will only show US now. Have you made a hierarchy? Okay. Okay. हाँ, ठीक है. You have to make a hierarchy. They're not linked actually data. अभी हम लोग we are not making hierarchy नहीं दिया तो वैसे ही होगा ना, क्योंकि one state will be it's heavier. They're not actually linked. hierarchy अगर नहीं रहेगा तो फिर one But we are creating hierarchy out over here. Where is hierarchy? नहीं, hierarchy नहीं है ना वो. That is not hierarchy, sir. That is not hierarchy. Okay. I'll tell you how to create hierarchy. Okay. But very simple. Go back to your data, Gopal. So just to let you know, you're having a US data. Then you have a state and city and pin code. So yes, whatever you just been writing here, 1, 2, 3, 4 columns. So map data already has this 4 columns data in their map. So what you're doing is just matching it. Even one city is not the same name. I'm not talking about alphabetical in terms of lowercase and uppercase. I'm saying the name. Then it will change. Right now you don't have lat long. Check with your file. Do you have? Yeah, no, we don't have lat long. Yeah, there are a lot of files where you have lat long. Fine, but that does not mean, because until there's the map data, right? So if I can I share my screen? Yes. I'm stopping it. So as I said, so GIS data. So just write GIS road data. See, road and highways, correct? GIS country data. Are you getting my point, guys? Yes. So these are the files. Download data country. Can you see this? See GIS data. The biggest company in the world called ArcGIS. That's in US based. Now they are actually also in India. They call ESRI. I worked for ESRI.
So this is again a map. And they'll give you a simple blank map and then their data. Right, so they also have free trial available. Roads and highways, can you see that? Okay. So they'll give you roads and highways data, you can download them. So what will happen if you see the map carefully? So you can see you also have this roads coming in. ये दिख रहा है ना? Yeah. Yes, yes. This is actually coming out from your file. Mhm. They draw it from the data. Okay. So this is one, let's say this road is being coming into as one city. So they're now putting a city data. So what do you mean by this? Your GIS data should have all the information. Now, when you want to restrict them, so when I restricting into this, but if I say only, right, Albany. Now this Albany is only one, I'm restricting it. So where I'm restricting from map data or I'm restricting from the physical data? Tell me. From the map data. Map data. Why the map data is same? That is about GIS information that is Correct. stored inside the map. GIS city name is similar than your data city name. Correct. So if I unchecked it, impacts in the map, right? And then even if I say, let me go and say top, somebody yesterday wanted for top, right? Top 5, Jagrati, I think. Right, Jagrati? Do you remember? Yes, yes. So that's a place you can do top 1, top 2, top 3. I wanted to show you later on, but anyway. Fine, so that revenue you can show them. This is city top 2. You have a top and bottom, or I can say advanced filtering or basic filtering. That will do it later on. So if I talk about this, it filters. So basically net to net, guys, it is not filtering your data from your table. It will filter data from the map GIS data. So what kind of data we have? We have country, we have state, city, zip. What is that? Roadways, road and highways. Correct? Yeah. Also, they will have something called river and sea. You know, they have a separate map. Have you ever come across? Have you heard that? But for sea route, yes, we should be having. See? River map of India. Knowledge river. So they have it. Okay, so net to net, see here. Download data by country. Can you see this? This I was talking about. So Afghanistan, let's say talk about India. इंडिया में क्या चाहिए? रोड, एलिवेटर्स और सारे चाहिए आपको. So what is the subject? Let's say talk about a population. I want to see them. Click OK. Download. I hope you're getting a point. The maps, very much important, guys. Yes, it's trying to get it. So can you see this is a different file altogether? They have a different file. What is the size?
Good size. 5 MB size. 93 is like 49 MB. Hmm. Hopefully, you know. This looks like 493,000. No? So 49 MB, right? 49. 1024 KB. No? Mm-hmm. So, and see, this is not a normal file. It's a binary file. And can you see that CR32? This is the code. A normal file will not have CR32. I'll show you. Can you see? Where is CR32? Yeah, got it. So they are actually standards, okay? How do we use this file? I mean, You don't. You import into the map. okay, directly. Uh-huh. Yeah, you will not use physically. It's a binary file. So what you see here in the in this map is actually using all binary files. And that binary file has the data, which is you can see with your data. Once we import it, then can we see it in a table format or no? No, you will not even see them. Acha. Then It is all about in your GIS. Mhm. In this Tableau and everything, they'll have a GIS data. Take a minute. यहाँ पे किधर लिखा होगा? See, is written here somewhere, no? Focus. See here, Microsoft Corporation. Can you see? TomTom. TomTom, you know what is that? Anybody knows that TomTom? No idea. Okay. If you travel abroad, it's a navigation system. Fine. TomTom has its own navigational system like Google Map. Okay. Yes, yes, yes. तो गाड़ी में लगाते हैं और उसको हम लोग ट्रैवल करने के लिए चाहते हैं. So we used to do in Australia. So Australia is a big one, big jungle. So we used to take TomTom. You have to buy, and they'll update the data. Same like I'll just show you. TomTom. See, it's a big company. First time I saw in TomTom. It comes in some cars also, no? I think. Yeah. Instead of using Gmap, it uses TomTom. TomTom सारे cars में ही आते हैं, देखिए ना, inbuilt है कई जगह तो. And they update every 2 months and 3 months. TomTom product maps. Can you see? Maps, traffic's traveling, digital cockpit. Digital cockpit में शायद दिखेगा. ये ऊपर में दिखता है, स्क्रीन पे आता रहता है. आपके विंडशील्डर पे आएगा. Traffic and travel informations. Let's go for the maps. Right. So they have TomTom as a machine or equipment, whatever we call. So this is the one, okay? This is the one. दिख रहा है आप लोगों को? Yes, yes. 299 इंडिया में बोल रहा है, गोली देते हैं. It must be dollar यार. So they'll update everything. Everything is inside. So they are actually, can you see? Now they are writing TomTom. Microsoft also took it from TomTom. Microsoft does not have its own. Oh, right. Because GIS has a different software, different data. It's a different world altogether. And GIS update is very tough because which road is digged up, you never know, right? Right. So they have to talk to the municipal corporation of a country or a city and all. They have to keep updating. The data comes from them. If they're digging something, then they'll update this data to TomTom. TomTom updating the software live to other people, so that they'll take other people other route. And in fact, Apple map is also very, very powerful.
So I was in London. I got completely lost. First time I went to London. So I caught somebody said I need to go to this road. He said wait. He opened iPhone. वहीं पे उसने search किया बोला just behind this road go. And I reached in 2 minutes. So like these guys are being very updated maps. Even you walk, you use a map there. So map has a very valuable stuffs. So we had one map, two map, which is this, and one you have your ArcGIS map. Now this is coming from Arc. Can you see that? ESRI. Okay. ArcGIS Enterprise. Sign in करना पड़ेगा क्या? Is asking me to sign in. See. Come on. No, I don't want to get signed. So this is coming from ArcGIS, which is ESRI. So people who does only for a mapping, and map related data, this is what they can see. Are we good from the map side? Yeah. Okay. Yes. So let me show you before you go and do practice. Yeah. Can you tell us how to make that hierarchy on the Power BI? Yeah. We'll talk about model में बनाएंगे. We'll create a model. That's it to cover. So one hierarchy which is already built. Pre-built hierarchy. Especially date में होगा ये देखिए. See, this is already date is by default. Yeah, we'll make it. We'll make it. Okay, I was supposed to tell you. Okay, now you guys have to tell me. I have just told you how to do a top 5. So let me put a revenue here and then I'll put a category. Okay, so how do we get the top 5? Data दिखाते हैं. Filters, you will get that category name. Where I'll go. So you want revenue top 5? What do you want? A category, if you put it, then it will automatically change based on revenue. No? Category name. Top 10. How many? Top 2. Add data field here. By add data field here means you want to put some data, especially to do a filter on revenue side or something like that. They can even put it. See, Jagriti, is it clear? Yes, Indra. Then you also have a bottom for 2. By revenue. Definitely, if you do by quantity sold, value will be changed. Yes. Right? Who's top seller, top 5 seller, or something like that. I wanted to give you this exercise, but now you did ask. I have shown you. Okay. So there would be some filter specifically if you want revenue specific on the page or you want a page on all pages, so that you can also do that. Because I'll remove this at all. Hide filter. Or you want to remove them. So here I'm not saying you can have a basic filter, so you can select all. That's it. Okay. Going back to the. Now you guys have to give me this.
slicer. You have to select year and you have to select month, quarter, day, 4 separate slicer. Go ahead and do that. Slicer, you know where you can get. This should be here. That's a card. Where is slicer? That's the slicer. Right? Please go ahead and do that. Year, quarter, month, day. Okay. So you have how many? You have this, then you have decision tree, then your matrix, list table. This is a table actually. Okay, so we got 4, 5 from here. One thing is missing here, not there, which I'll show you. Anyway, that's the last I'll tell you. So now you'll take 15-20 minutes. Please finish this and we'll go to the next. Right? Team, any question? How much time? 10 minutes. Okay, catch up in 10-15 minutes.
Everyone's done. Yes, yes. Done. Any update, guys? Yes, Done, not done. done, done. Okay. Screen share it, no? Anybody? Yeah, I will share. Can you see? Mm-hmm. So this is filters. This one is maps. Okay.
country and profit. This is post code and sales. I didn't have the state related data, hence I used code. And this is a filter. Filter all, I added select all, and also filter by region and product category. So these are product category and its region. So where is the year, quarter, month, day? I've asked you 4. Okay, we have to add four. I thought only we have to add quarter. Okay, I will add it. Next, anybody else? I'll project. My screen is visible. Yeah. So we didn't know whether hierarchy you wanted separate or different. So we did both year, quarter, month. And what is the last? Last is like I've clubbed all in single. You can Cannot be, no. you Month can do it over here itself. Be day, no. Either. Select that, remove everything, only day. Sorry, only day. Yeah, only day, no. From the fields, remove all this except day. Hierarchy उड़ा दीजिए, सिर्फ day ले लीजिए. No. आपने उल्टा किया है. Last one. Day निकाला है. Only day चाहिए आपको. Okay. सिर्फ day लीजिए. हाँ, अभी देखिए पूरा हो गया ना. Okay. So you wanted it separate, fine. Okay. Quarter, month, and day. How many years it has? Sorry? Single year. 2015. Single year के है. So how many months it has? Months, all it has. Okay. तो all किधर select कर सकते हो? Option दिख नहीं रहा मेरे को. 4 quarter ले मेरे चारों quarter select करना है. किधर select कर सकते हैं? I can't see. इसमें filter में है select all वाला enable करने का. हाँ. Customer को तो देना पड़ेगा ना आपको. Okay. इधर filter है ना, इसमें है. कहाँ पे? ये filter ये वाला ऊपर. Format. Go to format में जो, not filter. Format. Access के बगल में. इधर ऊपर हाँ उधर है select all उसका. Selection controls. नीचे select all. ठीक है. Okay. What does this mean? It is a multi-select. Multi-select control करके होगा, ठीक है. Okay, आप एक काम कीजिए. It's okay, leave it. Now what we'll do? Select all कीजिए. Not here. Which year? Where you want to select all? All your months, select all. Okay. ठीक है. अब what is the current month we are in? We are in February, right? तो default value क्या दिखना चाहिए? उस पे क्यों जा रहे हो आप? डे में क्यों जा रहे हो बार-बार? Why are you going to day? हम लोग मंथ की बात कर रहे हैं ना, तो मंथ में स्टेबल रखो ना. नहीं आप सेलेक्ट मत करो बाबा. Why you select? So you are saying okay, default it should change. Okay. Customer अगर आएगा तो क्यों select करेगा? When it comes, he'll automatically select all करके रखिए आप. Okay. अभी whenever I open this according to the month, तो आप filter करो ना. आप filter में जाओ. Which one you want? Filter is February. Yeah. वो देखिए ना, filter visualization के पहले है filter. Filter, not here. ऊपर में left, yes. अब आपने filter करना है. ठीक है. तो अब देखिए filter का कोई option है? Click here. No. Advanced filtering.
यहाँ पे शो आइटम्स वाला एडवांस फिल्टरिंग के अंदर जो ये शो आइटम वाला कंटेंट्स की जगह पे क्लिक कीजिए उसको, कंटेंट्स को क्लिक कर यहाँ पे मैक्स बाद में Sorry. contains, not contains, start with इस करके करंट मंथ सिस्टम पास कर डेट, सकते हैं क्या? सिस्टम डेट कहाँ पे हो रहा है, मतलब किस किस पेज पे मैच करने के लिए कुछ डेट चाहिए ना? ओके, गो डाउन, क्लिक, इसको क्लिक कीजिए, गो डाउन, वेट, वो एसक्यूएल वाला मंथ वेरिएबल चलेगा क्या इसमें? Which returns the default month? नहीं, वो नहीं चलता। अच्छा ठीक है, कंटेंट्स फैब लिखिए। अभी फिल्टर कीजिए, ठीक है। I'll have to come back and I'll tell you by default के लिए क्वार्टर सेलेक्ट कीजिए, go to the quarter, Select all. या सेलेक्टेड नो, बॉक्स तो सेलेक्ट कीजिए पहले। हाँ ठीक है, अभी वेट अ मिनट, फिल्टरिंग, एडवांस फिल्टरिंग में देखिए, I'll have to come back and tell you. I think there's a default value which we need to set. Which month, which day. I'll update you. मुझे याद दिला दीजिएगा. Okay. I think I did that. I need to set the value somewhere. Go to the year. Year. Wait a minute. Is equal to कुछ है क्या? इतनी इस सेकंड वाला is कीजिए is, और वैल्यू में देखिए, वैल्यू में लिखिए करंट ईयर, करंट अंडरस्कोर ईयर। यहाँ पे उससे अच्छा हम लोग क्वार्टर में ट्राई करते हैं, इसमें एक ही साल है, समझेगा भी नहीं, कुछ हो रहा है भी नहीं। मैं सिर्फ वो देख रहा हूँ, मैं मिसिंग समथिंग, ये उस पे क्लिक किया, व्हाट इज दैट? एंटर नंबर्स ओनली। ओके ठीक है, I'll update you. मैं कहीं ना कहीं कुछ दिमाग से निकल रहा है, I'll have to tell you. So basically what I'm trying to tell you, if you have a multiple years or multiple quarter, when you run your dashboard, right, the user should see only the current one. क्या समझे? करेक्ट। तभी लॉजिक। डे भी सिस्टम डेट के हिसाब से ही वो सेट होना चाहिए ना, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली ईयर क्वार्टर मंथ भी उसके हिसाब से रहेगा। तो सी अभी क्वार्टर 1 है ना, करेक्ट, तो आपका डैशबोर्ड क्वार्टर 1 का ही डिटेल दिखाएगा। No, it does not mean does not has the data other than the quarter 1. It has all the data. It will but be default selected. Quarter 1 until unless you go and make changes. ठीक है, you please remind me somewhere. मैं आपको Okay, I will note this. कहीं नोट कर लीजिए। Okay, others one. जागृति। मैंने गूगल पे देखा तो उसमें बोला कि वो डैक्स कमांड लिखना पड़ेगा। हाँ, डैक्स का ही लिखना पड़ता है। डैक्स इज वन ऑप्शन, बट इधर से भी कर सकते। I'll show you, हाँ, मैं बता दूंगा आपको, just not a big deal. Indra, I have joined through my phone today, so I can drop a snip of my. What happened to your laptop? Nothing, actually. It's easier to see from phone and then
do it on your laptop, because in laptop I have to switch on your screen and then my screen, then it little. Oh, mind blowing. Phone is more important than laptop. Okay. So what now? How do you going to show them? Will you connect? दोनों से connect कर लो ना. Yeah, just a second then. ठीक है. Tejas, meanwhile you show that. Rohit, Tejas. Yeah, okay. I'll share my screen. So is my screen visible? Yes. Yes. So this is here quarter, month, and day. कुछ भी selected नहीं है आपका. You not selected anything. By default, it is selected like everything. Sales, profit and region. इसमें क्या क्या है? Profit है और क्या है? Profit and sales by profit region. sales. Okay. I mean revenue you Sales talk. versus profit. और नीचे वाले में क्या है? Profit count by क्या है? Profit and count. This one is sales, profit, and count of product in a region. मतलब ये region में west में कितने product sell हुए? It's like 255 different type of product has been sold. उसका क्या profit है, right? हाँ, profit है, sales है, और plus product का distinct count है, count of product name. आप एक ही सेल प्रॉफिट को अलग अलग तरीके से दिखा रहे हो यार. It is repeating. I told you yesterday, right? Repeating customer have likes. सेम चीज को आप तीन अलग डायग्राम में दिखा रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा उसको? This one is different. काउंट ऑफ प्रोडक्ट नेम कैसे आएगा? तो काउंट ऑफ प्रोडक्ट नेम रखेंगे तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने वो आएगा क्या? एक ही प्रोडक्ट नेम. सेलेक्ट दैट, सेलेक्ट वो उसको सेलेक्ट करो और एक्सेस दिखाओ. एक्सेस दिखाओ. वेट करो. रीजन लिया आपने, सेल्स लिया, प्रॉफिट लिया, और काउंट ऑफ प्रोडक्ट लिया. ठीक. इसको राइट क्लिक करो नीचे काउंट एंड प्रोडक्ट में. यस. यहाँ पे इसने काउंट लिया होगा, देखो. टोटल काउंट है. डिस्टिंक्ट नहीं हो, टोटल काउंट है. टोटल काउंट है. डिस्टिंक्ट बोले तो काउंट डिस्टिंक्ट कर लो ना. क्लिक ऑन काउंट डिस्टिंक्ट. हाँ, वैल्यू चेंज हो जाएगा. कभी भी काउंट मत लो यार, काउंट डिस्टिंक्ट लो. I thought वो distinct ही ले रहा, मैंने ये ऑप्शन देखा नहीं था. अरे ठीक है. ओके ओके ओके, नो वरीज. बट ये रिपीटिंग है. हाँ, this one is आप क्या कर रहे हो? तीन ग्राफ में एक ही चीज को दिखा रहे हो, तो कस्टमर विल नॉट बी हैप्पी. उसको बाकी डेटा नहीं दिख रहा है ना. सो यू फिगर आउट. आई थिंक द सेकंड वन लुक्स, थर्ड वन लुक्स मोर बेटर. क्या बोलते हैं गोपाल, चिन्मय? हाँ, कोई भी एक ले सकते हैं. कोई भी एक नहीं, तीसरा वाला ज्यादा बेटर लग रहा है. सेल्स एंड प्रॉफिट एंड काउंट. तीनों दिखाया ना इसमें. यस. बाकी दो को उड़ा के दूसरा डालना. कुछ एम्प्लॉय वाइज दिखाओ, चैनल वाइज दिखाओ. रोहित, आप समझ रहे हो ना? कैटेगरी वाइज दिखाओ, चैनल वाइज दिखाओ, एरिया वाइज दिखाओ. आप खाली यहाँ आपने टोटल दिखा दिया. Q1 का ये आपका सेल्स है, करेक्ट? These are the sales, these are the profit over these are the number of sold, product sold. चलेगा? ओके. आप रीजन आप अब जाके इसका उसको सेलेक्ट कर. उसका प्रॉपर्टी में जो आपने बहुत नेमिंग कन्वेंशन बहुत खराब किया है. गो बैक टेबल, go to the format, go to the table property, title, go down, title, and tell me what is the title we should write here. Tell me what is the right title. Let's see how you understand a business.
काउंट ऑफ प्रोडक्ट नेम को रिप्लेस करना प्रोडक्ट पूरा हो डिलीट जाएगा कीजिए, पूरा डिलीट कीजिए, डिलीट बहुत कंप्लीटली। बड़ा अभी लिखिए, बताइए क्या लिखेंगे। It should be like count of product name. नो, नहीं ऐसा नेम आएगा ना तो रोहित वो कुछ दूसरा मीनिंग देता है मतलब वो कस्टमर लेजेंड को ऐसा देखने का है, आप कस्टमर हो, आपको टेक्निकल नहीं आता, क्या क्या देखेंगे आप? आपके ग्राफ में क्या दिखाया आपने? Sales profit and count of the product. काउंट को छोड़ो बाबा, काउंट काउंट मत। प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट बोलेंगे ना तो भी वो प्रोडक्ट सोल्ड इज योर काउंट यार, प्रोडक्ट सोल्ड। कस्टमर को क्या मतलब है काउंट से? नो नो नो, डोंट राइट प्रोडक्ट सोल्ड, आई एम जस्ट टेलिंग यू काउंट का क्या लिखोगे, इधर क्या लिखना चाहिए? गोपाल, चिन्मय, प्लीज हेल्प हिम। आई वांट अ बिजनेस डेफिनेशन, नॉट टेक्निकल। regional sales and profit of products. व्हाट इज दैट? This is a region, na? So regional sales and profit of products. लिखो, sales, sorry, don't write sales, revenue versus profit by region. Making sense, guys? Yes, but products को products दिख रहे हैं वो how do we know? By item sold or product sold, by region and product sold. क्या समझा? Gopal, Revenue Chinmay, versus profit. is it more business oriented, not technically oriented? ठीक है, और आपका y एक्सेस में किधर है? आपका z एक्सेस है ना? आपका काउंट ऑफ प्रोडक्ट में लिखिए आइटम सोल्ड, go and find out that access count wala, go close it, go down, go up, go slowly, plot area, y axis नहीं, y axis तो आपका वो काउंट किधर है? देखो प्रोडक्ट काउंट, वो शायद प्लॉटिंग में होगा। ऊपर का सारा क्यों खोल रखा है? You should have closed it, no? ना अभी एक ही खुला हुआ Close everything. What is that? y axis. Yeah, close it, close it. Go to the count of product. Title मत ढूंढो, सर्च करो count of product name. I don't think ऐसे आया ना? डेटा कलर है तो सिर्फ Legend में तो change कर सकते हैं directly count of वहाँ पे कर सकते हैं. काउंट ऑफ प्रोडक्ट नेम, ये काउंट ऑफ प्रोडक्ट नेम है ना इधर आपका, y एक्सेस से क्या है चेक करो, y भी नहीं है तो एक काम करो, ये चेक। Filters on visual में आएगा ना? नहीं नहीं, इसमें चेक करो, क्या बोलते हैं, प्लॉटिंग एरिया में होगा शायद, चेक करो। Not here, sir. Here you can't do anything. Here you can't do. Wait. Why you removing? rename for this visual count of product. कीजिए। Yes, ये यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट सोल्ड। ठीक है, चलेगा। Okay. सो काउंट वाउंट नहीं दिखाते हैं इधर भी। Got it. Okay, hang on. You can do little more. ये तो आप माइनस भी दिखा रहे हो। ईस्ट में आई गेस प्रॉफिट नेगेटिव काम करो, इसको कॉपी करो, इस विजुअलाइजेशन ऊपर वाले को डिलीट करो, रिमूव द ऊपर वाला, दिस वन इसको डिलीट करो। हाँ, नीचे वाला कॉपी पेस्ट करो, जस्ट डू कॉपी पेस्ट।
कॉपी पेस्ट, ऊपर ले जाइए, सेट कीजिए प्रॉपर। ओके, पहले सेव कर लीजिए इसको। इसको कन्वर्ट कीजिए आपका, वेट अ मिनट, मेरे को नेगेटिव दिखाना है तो वेट कीजिए। यू हैव हाँ इंद्र, इसका टाइटल ऐसे रख सकते हैं क्या, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय रीजन? रेवेन्यू एंड नहीं होता कभी भी, रेवेन्यू को हमेशा प्रॉफिट से वर्सेस। तो देन रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय रीजन। हाँ चल जाएगा, मतलब कुछ भी बिजनेस टर्म होना चाहिए। बिजनेस टर्म। आप उसको उल्टा कर दो, सीधा कर दो, ऑफ कर दो, इन कर दो, डज नॉट मैटर, बट काउंट ऑफ प्रोडक्ट, these things will not help them. Our revenue is always versus product revenue, product sold, or versus by anything. It has to be versus. ओके। डेट वाला, डे वाला स्लाइडर कैसे किया? डे वाला जाके स्लाइड चेंज करो ना, शो हिम between बिटवीन करो। हाँ, so you just go and drop down there. वो मैं लास्ट डे बताने वाला था, but good that you already started. Those are little advanced which I wanted to show you a little later. ठीक है, चेंज कर लीजिए। I wanted to show you go to the first, second, third. आप फर्स्ट से विजुअलाइजेशन में go to the third one or fourth one. What is that? clustered bar And the next one is column chart. okay. I want to get it a negative separately, man. Not this, not this. Wait. Okay, select the first, second, third, fourth one by one. No. पहले first select करो. Yes. नेगेटिव आ गया। समझा क्या? क्यों दिखाया मैंने ऐसा? गोपाल चिन्मय, आपको समझा क्या? क्योंकि इधर में नेगेटिव क्लियर नहीं है, इस वाले क्लियर नहीं आ रहा है, वो लाइन नीचे जा रहा है पर। अभी आप दोनों को रखो। अभी एक चीज मेरे को दिखाना क्या है, ये एक्सिस को शिफ्ट कर सकते हैं क्या हम लोग, क्योंकि थोड़ा मे बी राइट हैंड से शिफ्ट करेंगे तो इसका ये इसमें से काउंट निकाल देता हूँ ये वाले ग्राफ में। नहीं, रुक ना भाई, रुक। निकाल के थोड़ी काम चलेगा, कस्टमर वांट्स एवरीथिंग ना। ओके, सेलेक्ट द फर्स्ट वन। अच्छा, ये ग्राफ विजुअलाइजेशन। ओके, दिस इज आल्सो ग्रेट। अभी नेगेटिव का वैल्यू नहीं दिखा रहा है क्योंकि आपके पास उसका रेशियो ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, सेकंड वन। No, that's not good. Third. Okay, fourth. Fourth is the same thing what you have. Fifth, sixth भी कीजिए. No. That is still better. Minus में this is showing in percentage. But go to that third one only. इसके पहले जो हमारा था उसमें जाइए. Yes, यहाँ पे wait a minute. So you're saying 29. So what is the blue color? Blue color is sales. एक काम कीजिए पहले. Wait. Not blue यार. That is navy blue. आप पहले legend को right में लीजिए. Go to the format. Legend में चाहिए. Make it to the right. Okay. अभी आपका sales हो गया, profit हो गया. Count of product को change करके product sold लिखिए. Go down. ये axis में axis. फॉर्मेट है ना वो, एक्सेस में चाहिए पहले टैब।
Yes, go down here, rename कीजिए जहाँ आपने पहले किया था. Go up. Product sold. Okay, sales, profit, product sold. तो आपका प्रोडक्ट सोल्ड नहीं दिख रहा है. गिव मी अ मिनट. ओ, प्रोडक्ट सोल्ड दिख रहा है. पूछो किधर है. ये इधर है ओके वाला. थर्ड लाइन, डेटा वैल्यू करो. डेटा लेवल में जाओ. गो टू द फॉर्मेट. गो टू द लेवल. नीचे जाओ. ठीक है, डेटा कलर में जाओ. ऊपर ऊपर ऊपर, नॉट दिस. वो छोड़ दो बाबा. डेटा कलर है ना हाँ एक इसको. हाँ, डेटा कलर. वेट, प्रॉफिट दिख रहा है आपको. आइटम सोल्ड दिख रहा है, उसका कलर चेंज कर दो, ब्लैक कर दो. विच वन प्रॉफिट का. प्रॉफिट नहीं बाबा, प्रोडक्ट सोल्ड. ब्लैक दिख रहा है. ब्लैक थोड़ा सा दिखा. नाउ डू वन थिंग. ये ओके ओके क्या रहा है. उसका तो वैल्यू 0 लिख रहा है. अब तो उसको के हटाओ, ऑटो में डालो उसको. डेटा लेवल में जाओ. उसको ऑटो मत करो. उसको नन करो. नन में क्या आएगा. नन में, हाँ, एक मिनट. ऑटो में क्या आता है. शो दी ऑटो. डेसिमल 2 कर देना पहले तो आप. 2 डेसिमल. ये केस में ऐसा कर सकता है क्या. क्या. कस्टमाइज सीरीज एंड देन मैं प्रोडक्ट सोल्ड को नन रखता हूँ इंस्टेड ऑफ ऑटो. प्लीज काउंट. वहाँ दिख रहा है बट वेटिंग का नहीं दिख रहा है. ठीक है, दिस लुक्स स्टिल बेटर. बट अपन को क्या, एक काम करो आप, लेजेंड को नीचे लेके आओ. बॉटम लेजेंड को. गो टू द लेजेंड. ऊपर. नहीं नहीं, फॉर्मेट में जाओ ना, एक्सेस में नहीं. लेजेंड, या टेक इट अ बॉटम. हटा दो लेजेंड. नॉट नीडेड. रिमूव इट. रिमूव इट. नॉट हियर, नॉट हियर. ठीक है. So you have product sold. So you have product this. Okay. This is much better than previous one. But ये नीचे वाला मिलियन क्या दिखा रहा है. आपका नीचे में मिलियन में दिखा रहा है ना, उसको जाके आप ऑटो करो. सेलेक्ट द नीचे वाला ग्राफ. या go ahead and make it data level. Make it 1000. या नन में डालिए. this is still better. So keep it like that. यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है. So you're saying product. Wait a minute. Now this is more better, right? Yes. चिन्मय, गोपाल सर बताइए, which one is better? ऊपर वाला, नीचे वाला? पर्सनली नीचे वाला मुझे अच्छा लग रहा है. और अच्छा लग रहा है ना. हाँ, that's what I'm saying. But I wanted to get my negative done right separately. ठीक है, अभी आप ऊपर वाला रहने दीजिए, but you can remove it later on. So now you have a third line, no? So it gives you more graphical changes. ऊपर वाला से better नीचे वाला है. But now you have a minus very clear. Earlier it was not clear. Fine. और प्रोडक्ट सोल्ड ऊपर वाले को फिर डिलीट कर दीजिए. लेट इट बी. यू कैन एटलीस्ट लर्न फ्रॉम देयर. लेट इट बी देयर. जस्ट सेलेक्ट द नीचे वाला एंड गो टू द लेजेंड. मेक इट इन द सेंटर और अ राइट समवेयर. गो अप. मेक इट राइट. नो, हाउ अबाउट बॉटम. जस्ट गो सी द बॉटम. अच्छा अभी ये नेगेटिव वैल्यू दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था. दिख रहा था पहले भी. अच्छा ओके.
मिलियन में डाला था ना तुमने, ये उड़ा दो यार, लेजेंड हटाओ, उड़ा दो, नहीं चाहिए मुझे, लगता नहीं चाहिए। ठीक है, अभी बड़ा दिखेगा। और ये व्हाट इज कॉल्ड योर रीजन, उसको थोड़ा बोल्ड वोल्ड करो ना, क्या बच्चा दिख ही नहीं रहा है यार, क्या वेस्ट, क्या सेंट्रल, कुछ नहीं दिख रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को थोड़ा बोल्ड करो, बड़ा करो, यू शुड शो द वे इट शुड, थोड़ा बड़ा करो। यस, एंड सेम all goes to the other one. No, not here. अरे बाबा, वाई एक्सिस, y वो तो आपको दिखा दिया मैंने, जस्ट टू यू कैन कीप इट, बट दिस इज हैविंग मच बेटर। वो जो फिगर्स भी है ना, एक वाई एक्सिस के, वो भी उसका कलर तो ब्लैक करेगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। वो अभी ग्रेइश है ना, तो फिगर्स वो इतने अच्छे ब्लैक नहीं कर दिख लो रहे। आप, या ब्लैक, या सही। कलर ये वाला ओहो, वाई एक्सिस का। वही गोइंग अप देयर, नो, गो बैक, गो डाउन, यस। ये डार्क ब्लैक बेटर है, बाहर दिखता है। Okay, that looks fine. Reason and sales and profit, product sold, ठीक है, product sold में जाइए, product sold में you can't make more, you can't put more bold and something. Go to the access before one tab, go down, line value, इसको formatting कर सकते हैं, नहीं कर, show value as go, no, ठीक है, तो line item का नहीं कर सकते। So you taken this what type you taken, line chart? this one is line and clustered column That's chart. what I said, no? Line cluster. Okay, so this is looking much better. Save it. So you got something new, right? After showing me, you got something new here. So you figure out first wala utna better nahi hai, second wala because of line is giving more better, and put negatives very separately. मैं बताऊं, एक और भी चीज करो, नेगेटिव को उसको रेड में डालो, negative, select this, go to the data I mean level layer color, data level color, not here, yes, data, yeah, ऊपर वाला, yeah, this one, yes, go down, yeah, this profit, wait a minute, negative, it is not, it will not come, it will come only one, it is a profit only, फिर DAX लिखना पड़ेगा, ठीक है, no worry, looks okay to me, otherwise should have a negative, then उसमें देखिए कुछ all का function है क्या, go little down, नीचे और कुछ है नहीं। no it's not there, it's not there, ऐसा कुछ होता है क्या इंदिरा, कि मतलब फिल्टर्स ऑन विजुअल में जाके अगर हम लोग एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दे थ्रेशोल्ड, उसके नीचे अगर वैल्यू है तो वो उतना पार्ट नेगेटिव रेड में या वो फिर कंडीशन अप्लाई है, वो टेबल में दिखाएंगे, सॉरी? कंडीशन फॉर्मेटिंग, ओके, that is there only on table, not in graphs. ओनली ऑन टेबल। आपने देखा होगा रेड कलर, ब्लू कलर, राइट राइट, यस, आपने वो कुछ कार्ड्स भी बनाए थे ना, वो कार्ड्स भी। कार्ड्स में बता रहा हूँ, वो बताऊंगा अभी, ठीक है, but इससे कुछ you got learn something, right? Negative values कैसे separate करना है, because I can see negative, so तभी मुझे लगा आपको बताना चाहिए। यस, Good, looks fine. Good.
So Okay, one question, Indra. The selection of the slicer. Tejas, can you slice it down to 25 days? day वाले में. Day को Don't नहीं हाँ type. slice को करो या 25 कर दो. Okay. Okay. Don't type. So the calculation is changing out here. So Yeah, it is doing a sum on those 25 days for all the 3 months. Yes. Once तो पूरा select नहीं किया मतलब total ही है ना. आप इसमें जान click करो. Click and जान. See? इसको थोड़ा और करो. Make it till 10. 1 to 10. Slicer. Yeah. It will impact, no? Oh, minus. It's going in minus, man. This line chart is awesome, man. I liked it. What do you think, Gopal? Chinmay? Yes, yes. ये धंधा बता रहा आपको. रोहित तू भगा देगा नौकरी से, सबको ले डूबेगा तू. साला सबको ऐसे नेगेटिव दिखाएगा, कस्टमर मार के भगा देगा. ठीक है. इसके लिए अपन लोग राइट बैक फीचर यूज करते हैं. जब भी ग्राफ में दिखाओ तो पॉजिटिव दिखा, नेगेटिव दिखाइश नहीं. Good. So we'll come back for the break and let's see, we'll do more because I have I think I was planning to do a DAX today or data modeling. Data modeling abhi karna bacha hai, right? Yes, you mentioned yesterday. Yeah, so today planning to have my data modeling done, and then today and tomorrow data modeling in DAX. And Friday ko I will give you a project, man. So remember, it is a project day. You guys have to create a project. So 2-3 people in one team. So 2 team will make it, and I'll give you one is sales, one is finance. Okay. I want maximum good, great terminologies and good features. Dashboard दिखना चाहिए proper. Correct. So if I show you my dashboard, though it isn't a very great one, but it will give you some fair idea which you have been looking at every day. So you can see here, can you see this? What are his gifts? Is it any repeating? Come on, let me see that. We're showing it's a revenue, analytic. It's yeah, it's showing Are we revenue. repeating anywhere? No, not in this one. We are talking about a total revenue, right? This is the card which I'll show you. Then we have a total unit sold, product sold rather. You can write unit sold or product sold. Revenue by year, followed by, you can go to year, quarter, month. You didn't show us a drop down, no? This drop down which you have created. Yeah. This one, right? Yes. This you did it just now, no? Slicer is the, how do you hide the rest of the portion? You just minimize it, the panel size, or? Yes. I'll come back. Fine. So here you see revenue by employee, right? You can have supervisors and employee, okay? So आपको hierarchy बनाना पड़ेगा, hierarchy भी बताना है आपको. And then you have store, revenue by categories, fine, and revenue by customers. You getting a point? So this is called dashboard. So I'm getting all revenue. एक चीज इसमें छूटा हुआ है. What is missing? Tell me what? Region. No. अभी जो रोहित ने किया. Revenue versus profit by product, by reason. उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा ना. बट मैं नेगेटिव दिखाना नहीं चाह रहा था. But it's good. You should show their reality, customers' reality. वो आपको देखना, आपका बॉस बोलेगा नहीं नेगेटिव ये वाला हटा दो, नहीं चाहिए मेरे, क्योंकि उसका बॉस बोलेगा नेगेटिव क्यों आ रहा है. Fine. Good. So should we go for break and come back?
Just 1 minute, Indra. Can you? I was trying to do the same thing. Year, all, और ये कैसे करना है? कौन सा? यही आपने जैसे बनाया है, year, quarter, all. हाँ हाँ. वो How do ड्रॉप you? डाउन नहीं आ रहा है मेरे को हाँ. स्क्रॉल आ रहा है छोटा किया तो How did you create that? Can you show just one? yeah, this is you want to get it like this, right? Yeah. हाँ, तो आप शो टेबल करो, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाओ, क्या दिखना है इसमें? लिस्ट करना है, ड्रॉप डाउन करना है, बिटवीन करना है। बिटवीन करेंगे तो ऐसा आएगा। बैक चले जाओ, ठीक Okay. है। Show as table. अच्छा. यहाँ पे जाओ, शो एज टेबल में, ड्रॉप डाउन में जाओ। मेरे को ड्रॉप डाउन चाहिए था तो ड्रॉप डाउन ले लिया, करेक्ट। इनमें इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। ठीक है ना? लेट्स हैव अ ब्रेक एंड कम बैक एंड देन डू विद लिटिल मोर। अच्छा, ये Okay. आपको एवरीबॉडी हैज कंप्लीटेड ना दिस चैप्टर? एनीबॉडी हु इज नॉट? Tree map we didn't touch upon, and टेबल भी टच नहीं किया है तुम लोगों ने अभी यार। टेबल नहीं दिखा मेरे को, मैट्रिक्स भी नहीं बनाया है। ट्री मैप बनाया गया है, फिर सिर्फ एक ही बनाया है तब से 15 मिनट में। हम लोग वर्ल्ड मैप में इतना अंदर घुस गए ना। अच्छा ठीक है, डू वन थिंग, विल टेक अ ब्रेक फॉर कितना, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, कितने दिन का ब्रेक लेना है? कितने देर का? 20 15 to 20 at least. ठीक है, तो उसमें बाद में 10 मिनट्स आप ऐड कर लो, ये फिनिश करके दिखाओ, ठीक है। Okay. गोपाल एंड टीम, ये जो बचा हुआ है, ऑल थ्री All three in 10 minutes. Wow. 15 मिनट 20 मिनट ले लो यार। 1 2 3 और एक 4, नहीं ये तो नहीं, 3 ही है आपके पास। Table, matrix and tree map ना 3. हाँ ठीक है, 15 मिनट में हो जाएगा। ब्रेक के बाद 15 मिनट ले लो, ठीक है। यू गाइस जस्ट पिंग मी वंस यू गाइस बैक, ठीक है। I'll also go for breakfast. Make sense? Okay. बोलो दोस्तों, बोलो। Okay. Yes, yes. ये Okay. आवाज कुछ ठीक लग रही है, पहले से बेटर लग रही है, क्या लग रहा है आपको? Much better. Much Much better than yesterday's, I guess. आज तो बियर मार ही सकते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे लगा पहले से हो गया रहेगा, इसलिए ठीक हो गया। नहीं साले, बियर कैसे मारेंगे, गला खराब है ऑलरेडी। गुड सी यू, विल कैच अप वंस यू फिनिश इट, लेट मी नो। और जो पॉइंट लिख रहे हो शेर में, वो मेरे को एक दिन पहले बताने का, कल मेरे को बता देने का क्या क्या करना है, सो दैट मैं फ्राइडे को आपको जो बचा है बता दूं, ठीक है। Okay. फिलहाल आपको एक चीज बताना है, राइट, बाय डिफॉल्ट वैल्यू। हाँ, yes, default. और कुछ तो नहीं है। यू वांट टू सी माय आर्किटेक्चर, दैट्स व्हाट, राइट। That was there, and time series also you had mentioned long back. टाइम सीरीज में दिखाऊंगा, बताऊंगा। टाइम सीरीज है अभी, वो टाइम सीरीज का, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, पावर बीआई एनालिटिक्स, इसमें दिखाऊंगा, Okay. ठीक है। मैंने सब जुगाड़बाजी करके बना दिया है पीपीटी, कि भैया आपको सब कुछ कवर करना है, ठीक है। Correct. बाकी प्रैक्टिस है आपका, उसके Yeah. अलावा आपका Yeah. प्रैक्टिस है। डोंट एक्सपेक्ट कि ये 5 दिन में सब कुछ हो जाएगा। But हम लोग को एक्चुअली आई गेस डैक्स में ही काफी इंटरेस्ट रहेगा समझने के लिए, हाँ डेक्स है, डोंट वरी। और बटन्स भी आप बोले थे ना, बटन्स भी कैसे बुकमार्क आप तो एंड वो लिख लो ना, वो सारी चीज लिख के रख नहीं लो, मैं मेंशन भूल लिखे जाऊंगा। मेंशन आप लिख लो, मेरे को बताओ कि ये बटन्स बताना है, बुकमार्क बताना है, तो मैं बता दूंगा। ठीक है। ओके। ओके चलो, सी यू, विल कैच अप।
हेलो हाँ सर, हाँ आवाज आ रहा है। हाँ चिन्मय, ये टेबल का साइज कैसे बढ़ाने का है? बहुत छोटा है, मिल रहा है साइज बढ़ाने का? स्क्रीन शेयर कर रहा है क्या वो? उसको दूसरे जगह पे क्लिक करके ना वो टेबल पे क्लिक करेगा तो फिर उसको अप डाउन कर सकते हैं, पर एक लिमिट के बाद में आई थिंक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मैं मेरा तो एकदम छोटा छोटा आ रहा है, उसके बड़ा भी नहीं हो रहा है। देखता हूँ मैं, मुझे भी वही करना था। देखता हूँ, नॉर्मल एलिमेंट साइज बढ़ा सकते हैं पर वो अंदर का कंटेंट का देखना पड़ेगा। विथ सेट करने का ऑप्शन नहीं है टेबल का। हाँ वही ठीक है। ग्रेड ग्रेड एक दिख रहा है, ग्रेड में फिर साइज देखता हूँ कहाँ पे मिलेगा। रोहित तुझे मिले तो बोलना। एक ग्रेड टेक्स्ट साइज देख रहे हैं, टेक्स्ट साइज बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली हाँ सब वही, बढ़ेगा। मैंने हाँ भी टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर दिया। हाँ। फील्ड फॉर्मेटिंग के अंदर है टेक्स्ट साइज? फॉर्मेट के अंदर, हाँ करेक्ट। एक्चुअली मल्टीपल ये पेजेस बने ना तो सिंक होने में वो ऑटो सिंक पे जा रहा है। एक टेबल बनाने में बहुत टाइम जा रहा है एक्चुअली। किसको ऐसा हो रहा है क्या? क्या फटाक से हो रहा है? हाँ हो गया, बड़ा हो गया। फिर बड़ा मतलब मेरा फॉन्ट साइज इंक्रीज किया तो। लेकिन टेबल 100% विथ नहीं हो रहा है। अच्छा वो देखते हैं। वो फिट टू विड करके कुछ तो रहेगा आई गेस, होना चाहिए। उतना है करने से अच्छा। ये वेब यूआरएल क्या है, किसी को पता चला? हम्म वेब यूआरएल फॉर्मेट के अंदर हो सकता है लिंक हम लोग दे सकते हैं, वही होगा ना। और क्या होगा? कहाँ पे मिल रहा है वेब यूआरएल, किस में? फॉर्मेट में एकदम लास्ट में विजुअल हेडर्स दिख रहा है अभी, किस टेबल में देख रहे हो क्या? कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेबल में। देखता हूँ डिजिटल फॉर्मेट।
किसी को मिला क्या फिट टू विड्थ है क्या ऑप्शन टेबल साइज का? टेक्स्ट नहीं चेंज करना नहीं पड़ेगा फिर अपने को। नहीं, फिट टू विट का ऑप्शन नहीं मिला, मैंने पैडिंग इंक्रीज किया तो वो बड़ा हो गया। तो बहुत स्लो चल रहा है मेरे यहाँ पे। इनमें हाँ बोल ना रोहित। हाँ, वो जैसे एक्सेल में अपन नहीं करता है, ड्रैग करके बड़ा करता है। तो एलिमेंट साइज बोल रहा है क्या? एलिमेंट साइज कर पा रहा हूँ मैं। हाँ, टेबल को ड्रैग कर पा रहे हैं अपन। टेबल फुल ड्रैग कर पा रहे हैं क्या? हाँ, टेबल पे क्लिक करें तो उसके कॉलम को ड्रैग कर पा रहे हैं। हाँ, मतलब ड्रैग मतलब अगर एलिमेंट है तो मुझे एलिमेंट के अभी लेफ्ट टॉप मोस्ट पे दिख रहा है। अगर मेरे को टेबल बीच में बताना है तो वो कैसे कर पा रहे हैं? कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? बीच में मतलब मैं समझा नहीं। एक मिनट में जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये अभी ये फॉर एग्जांपल ये बना है, ठीक है। इसको मैं अभी ये पूरा टेबल को बीच में कैसे ऐड कर सकता हूँ? ये टेबल को है ना, ये टेबल को ड्रैग कर पूरा इधर। किधर कैसे ड्रैग हो रहा है? इधर इधर एकदम कॉर्नर में आना, टेबल के एकदम कॉर्नर में सेल्स वाला जो है ना लाइन, सेल्स वाला जिधर खत्म हो रहा है। सेल्स वाला इधर ये? नहीं नहीं, ये टेबल पे हाँ ये एकदम स्लोली, एकदम स्लो रुक माउस करना, स्लो। नहीं, अरे मेरे यहाँ पे बहुत स्लो चल रहा है। मैं कुछ भी एक्शन कर रहा तो वो नहीं इधर हो रहा है। उधर ये है बोल रहा ना, उसको ड्रैग करने का। वो लाइन बोल रहा है ना, तो वो लाइन हाँ ऐसे करना ड्रैग ना। हाँ हाँ, ठीक है, कॉलम हेडर से। ठीक है, देखता हूँ होता है क्या। देखो और कुछ तो नहीं। डिसेंट। अच्छा नहीं दिख रहा है वो। मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला सर्कल डाला। Guys, done? Still doing? यस Okay. seven. Okay.
Conditional for
Indra, I need help actually, or anyone can help me out. I'll just share my screen. मुझे ये जो है ना ईस्ट वेस्ट सेंट्रल साउथ ये सब जो दिख रहा है ना वो नहीं चाहिए था। ये डेटा लेबल्स अगर डेटा लेबल्स ऑन रखना ही पड़ेगा। कैटेगरी में अगर बंद कर देता तो वो ऊपर के जो रीजन नेम है वो भी जा रहा है। एक्सेस में जाओ ना, एक्सेस में, एक्सेस में यहाँ से डिटेल्स में से रीजन हटा दो, डिटेल्स में से ऊपर ऊपर तो ऊपर। यहाँ पे से रीजन ओके ग्रेट। और अभी ये जो नंबर्स है ये मुझे अगर सेंटर में चाहिए तो वो यहाँ से होगा कि कहाँ से होगा? वो आई गेस प्रॉपर्टीज में ही होगा शायद। तो ये लेबल्स में था, लेबल्स में डिस्प्ले यूनिट्स टेक्स्ट साइज पोजीशन किधर बता रहा है? तो ठीक है, यहाँ से जनरल में टेक्स्ट पोजीशन कहाँ पे है? डेटा कॉलम्स हेलो, यस, बोल्ड दिख रहा है, ये कहाँ पे नहीं दिख रहा है यार? आपने रोहित कैसे बनाया? ये फिगर्स जो है बीच में दिख रहा है क्या आपके एंड पे? नहीं मतलब मुझे तो वो लेफ्ट साइड में ही अच्छा लग रहा था, इसके लिए मैंने कुछ मुझे वो क्योंकि ये इतने रीजन्स बड़े हैं ना तो कार्ड जैसे ना बीच में ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। फिगर है तो फिर वो वहां पे आना चाहिए। टाइटल बट आई गेस फिगर्स या तो लेफ्ट या तो राइट में रहता ना, एक्सेल में भी वैसे ही राइट, हाँ लेफ्ट राइट में भी चलेगा, अगर ये लेफ्ट में है तो फिर राइट में भी चलेगा, पर आइडियली सेंटर में रहेगा तो मुझे ज्यादा मतलब लग रहा है वैसा बेटर लगता। किधर है ना वो नहीं समझ रहा है। कहाँ पे टूल टिप नहीं, शैडो नहीं, बॉर्डर इसमें शैडो कार्ड यूज किया क्या? कार्ड नहीं, नहीं किया है। अच्छा, उसमें नीचे वाला कैसे निकाले? मैंने ऊपर टाइटल डाला, नीचे भी आ रहा है, दो जगह पे दिख रहा है सेम। क्या ये यहाँ पे क्या कार्ड कार्ड कार्ड? इसमें अच्छा, नहीं। ओके। कार्ड तो ठीक है, पहले रीजन मैप तो ये ट्री मैप तो मैं तो वैसे तो कर सकते, क्या वो देखना पड़ेगा क्या वो कार्ड का एक्सक्लूसिव फीचर है कि मिडल में ही आएगा? कार्ड का आ रहा है मेरे को मिडल में, लेकिन ये नहीं आ रहा है। मतलब वो नीचे वाला कैसे निकले वो पता नहीं चलता। ये नीचे का क्या? अच्छा, नहीं नहीं, मैं दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। हाँ बताओ। ये रहा, ये कार्ड में नहीं, प्रॉफिट है ना, ये मैंने टाइटल डाला है तो हाँ इतना हाँ, प्रॉफिट है, लेकिन ये नीचे भी आ रहा है, ओके। दो प्रॉफिट था। ओके, देखना क्लिक कर उस पर, मिलेगा कुछ ना कुछ। फील्ड्स में एक्सेस में आ रहा है नीचे। कैटेगरी कैटेगरी है ना, कैटेगरी बंद कर नीचे कैटेगरी जा रहा को है। हाँ गया गया। ठीक है। चलते हैं। पर तो भी ये इसमें रीजन में अपने को वैल्यूज तो देखने पड़ेंगे ना, तो वो कुछ मतलब नहीं बनता है ट्री में। ये कैसे डाले ये मैनेजर, ये प्रॉफिट डिफिट, ये
हरा ये वाला? लाल, हाँ हाँ हाँ, इसमें सेटिंग था ये रहा। इसमें हाँ। गए ना, ये टेबल सेलेक्ट किया और मैं इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसमें ये सिलेक्ट करेंगे प्रॉफिट, और बाद में हाँ, यहाँ पे जाकर के आइकॉन ऑन कर देंगे और इधर एडिशनल इसमें जाके आइकन चेंज कर सकते हैं। अरे वाह मस्त है, थैंक्स। ठीक है, ये देखता हूँ। दिस इज गुड। कहाँ से किया, एक में दिखाना। मैंने इधर गया, बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ओके उसमें ओके। प्रॉफिट सिलेक्ट किया, हाँ। उधर आइकन ऑन किया, उसमें एडवांस कंट्रोल में जाके आइकन चेंज कर सकते हैं जो चीज। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, थैंक्स। हेलो कितने, हेलो कोई है? हाँ बोल बोल हर्षित। अगर आपने वो लॉसेस दिखा रहे हैं तो वो कैसे दिखा सकते हैं लॉस?
तूने किया ना वो, वैसे रेड में बता रहे हो तो वो लॉस में है ना, नहीं प्रॉफिट नहीं, आपने को अगर कार्ड में लॉस का वैल्यू दिखाना है सिर्फ, कार्ड में, हाँ तो प्रॉफिट ही आएगा ना, प्रॉफिट ही तो सिलेक्ट करेगा ना पैरामीटर एज। सेल, मतलब ये नहीं हो सकता कि यूनिट प्राइस माइनस सेल लॉस। तुझे फॉर्मूला चाहिए तो फिर वो तेरा सेल्स रहेगा माइनस लिस्ट प्राइस रहेगा। सेल्स माइनस लिस्ट प्राइस मतलब तेरा ये हो गया, प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट, जो बोलना है वैसे बोल सकता है। नहीं, मेरे को लॉस का वैल्यू चाहिए अगर फॉर एग्जांपल माइनस में। तेरा देख तेरा सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस ना, तेरा ये रहेगा राइट, ये फिर कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तेरा लिस्ट यूनिट प्राइस का समीशन है आपके पास? नहीं, यूनिट प्राइस मतलब एक यूनिट का प्राइस होता है, वो नहीं होता है। लिस्ट प्राइस करके कुछ है क्या, देख लिस्ट प्राइस। नहीं, लिस्ट प्राइस यूनिट प्राइस मतलब एक यूनिट का प्राइस होगा, फिर इनटू तुझे क्वांटिटी करेगा तो तेरा ये हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो गया, और फिर माइनस ऑफ सेल्स, वैसा माइनस ऑफ सेल्स रेवेन्यू। फॉर्मूला चाहिए तो जाने फिर में वही होगा तेरा। कस्टमर के काउंट बता दिए, हाँ हाँ, कितने कस्टमर। फॉर्मूला तेरा ऐसा होगा, रेवेन्यू माइनस ब्रैकेट में तेरा यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी, ऐसा। सिंगल यूनिट प्राइस नहीं है अपने पास, समीशन है यूनिट प्राइस का। फिर ऐसे बना दिया, टोटल कस्टमर्स, टोटल सेल्स, प्रॉफिट, सेल बाय रीजन, सेल बाय मैनेजर और प्रोडक्ट सेल्स, प्रोडक्ट कैटेगरी। अच्छा, ये तेरा मैट्रिक्स वाला कौन सा है इसमें, मैट्रिक्स टेबल? Guys, do you need me or no? Tell me. Should I go for छुट्टी? नो नो, लगता ऐसे ही रहा है यार, क्या दिखाओ दिखाओ क्या धांसू बनाया है। किसका है, चिन्मय का है, किसका है? नहीं नहीं नहीं, ये हर्षल ने बनाया। अरे बाप रे, हर्षल दिखाओ यार, कस्टमर खुश हो जाएगा यार। बट थोड़ा सा फॉन्ट वॉन्ट थोड़ा सा, और ये टोटल नीचे नहीं रहता है, हमेशा ऊपर रहता है। प्रॉफिट, टोटल, सेल्स बाय रीजन, ये सब ऐसा नहीं रहता है। मेरा डैशबोर्ड देखो ना, हाँ, बाप, कलर ये क्या वाला टेबल का कैसे फिट करना है वो समझ में नहीं आ रहा। क्या टेबल अगर 100% फिट करना है ये बॉक्स में, तो वो कैसे करने हैं, उसके कोई सेटिंग नहीं मिल रहा है। अच्छा देखता हूँ। ये व्हाइट स्पेस रह गया ना, तो अगर ये पूरा 100% फिट हो तो सिमिलरली देखता तो हूँ उसके लिए वो फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ा। नहीं नहीं, बट ये इतना इतना बड़े आपके पास अभी वो नहीं है ना, यू डोंट हैव लेस लेस नंबर ऑफ चार्ट्स कम है।
और आपने रीजन को छोटा लिखा है, वो बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, मतलब यू हैव मेड अ वेरी गुड वन, बट कैसा होगा मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा वाला याद है, आप इसको देखो। सी, हमेशा प्रॉम्प्ट ऊपर आता है, ये सिलेक्शन, ठीक है, और ये रेवेन्यूज एंड सोल्ड कभी भी नीचे नहीं आएगा, ऊपर आएगा। और आपको क्या चाहिए था, व्हाट यू वांटेड टू हैव? टेबल को फुल विथ करना है, टेबल को फुल विथ वो बॉक्स में फिट होना। नहीं होगा ना, डेटा कम है तो नहीं होगा। क्योंकि डेटा ज्यादा हो गया तो स्क्रॉल आता है, डेटा कम हुआ तो एकदम कॉम्पैक्ट है। दैट इज व्हाट द टेबल्स मीन, नो? उसको 100% नहीं कर सकते, विथ इट विल एडजस्ट ऑटोमेटिकली। परसेंटेज में विथ दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं बाबा। वो डेटा के बेस पे ही सिंक होता है बॉस, उसका कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। ओवरड्राफ्ट हो सकता है, फील्ड फॉर्मेटिंग हो सकता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग किया क्या आप लोग? किया टाइटल, बैकग्राउंड नहीं बस, इट हैज टू बी विद डेटा। देखो अभी स्क्रॉल आएगा, आएगा ना, अगर आप छोटा करेंगे तो स्क्रॉल आएगा। एक कॉलम विड्थ ही हम लोग को फिट करना है टेबल पे, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा नहीं, वो होता नहीं है, है। ओके। नॉट स्पेसिफिक कॉलम, इट्स अ डेटा स्पेसिफिक, नॉट कॉलम स्पेसिफिक, इट्स अ टेबल ना। हम टेबल को ओवरऑल वी कैन गो इंक्रीज एंड डिक्रीज, बट यू कांट से किस कॉलम को, इट्स नॉट अ एक्सेल शीट लाइक। कॉलम को कर सकते हैं बड़ा, कॉलम का इशू नहीं है, टेबल को अगर फिट करना है तो ये ऐसा कर सकते हैं इफ यू वांट। हाँ, वो उसका वो मिल गया, लेकिन टेबल को अगर हम फिट करना है 100% ऐसा नहीं तो बाबा। वो नहीं। आज डेटा मॉडलिंग के मूड में हो नहीं हो? चलो करते ना, पक्का करते भाई। वो पाई पी वाई क्या है वो भी बता दो। अरे छोड़ो यार, इतना करके तुम लोग क्या करना चाह रहे हो? सब मेरी नौकरी चली जाएगी, सारा बता दूंगा। आप किधर हम किधर कंपेयर नहीं कर सकते। अरे सर, आप उधर एनएससी स्टॉक एक्सचेंज, पूरा वर्ल्ड का कार्यक्रम आपके पास है, हम लोग तो नीचे है। आप लोग जो उधर उठाओगे सेंसेक्स गिराओगे, हम लोग का क्या है। ओके ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू द सेशन। We'll go open the second chapter and try to finish if possible. Okay, before that, wait. Before that, something which I wanted to tell you. So let's go here, delete this. So the important part of slider is, we'll put the value here. Let's say you're putting with, let's say where it is here. Let's go for quarter. Now here in quarter, so list or drop down, you can do that. Fine. You can do your formatting, and followed by, you will also have a by default value which is spoken.
Fine. So I'll have to just tell you the default selection for all of them. Before that, we also did, by the way, but I just want to make sure that you are aware. Where is your card? You understand how card works? Yes. But right now the card is overall 1 year, complete year. whatever data you have, Hmm. right? So better you can do a lot of formatting. Fine, it's up to you to decide how you want to show them. Unit, if you say none, will give you the actual value, right? And if you go for 1000, it'll show you in the case. Decimal value, it's too by default, you can fix it. Bold. Okay, that looks fine. Title, browser, shadow. So if you can see this data looks like too much. The font size, what should be the minimal font size? Standard. Text size, sorry, text size. Text size 10 to 20 in between, depending how much is display. If you can see here, I made it bigger. And while using this Copy paste. fonts now, which Times Roman or which should we prefer? Font family and font No, type? this is your own template. You decide. Your company decides, or the customer decides what he want to see them. Okay. See, I put it a revenue here at the top, and here revenue coming as a below. So I can put a title here, revenue. फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देंगे. Center 20. Bold. So that is go. That's nowhere. वो कैटेगरी बंद कर दिया तो हाइड हो जाएगा नीचे वाला. नीचे जो आ रहा है ना रेवेन्यू नीचे वो कैटेगरी बंद करेंगे तो हाइड हो जाएगा. You can have a background if possible. But I tell you the best thing is you should always go for a white. Now depending what your background is. So here you see our background is completely white. Then I can go for this. Okay, one plus point which I've never told you. If you select this, click on formatter, come to your place and click this. You understand what happened? Yes. What is this? Excel, PowerPoint, Yeah. everybody know that? Microsoft. Are there any shortcuts for this? I mean, for adding visual also, is there any shortcut? Just, you know. Adding visual from here. No, directly, like अभी नया visual बनाना है, अभी अपने कार्ड का बना है, मुझे अब ट्री मैप का बनाना है. ऐसा तो मुझे कुछ ध्यान नहीं, मे बी शॉर्टकट देखना पड़ेगा आपको, मे बी इफ दे हैव इन डॉक्यूमेंटेशन. आई कैन डू कॉपी पेस्ट, दैट्स व्हाट आई नो. हाँ. इफ आई हैव टू पुट आइटम हो गया, अभी अपन क्या करेंगे, आई गो हियर and say, right, so apart from revenue, what I'll say, sorry, I'll say product sold. क्या बोलते हैं?
This you want to put it data level. If you want to do this way, or you want to do a none. I think this mostly people will do this way. I did the same. So basically you can put either a number, or what do you think, Gopal? What is the best way? Also good. Comma. Comma may not be there. Then you have to go for DAX. आपको program लिखना पड़ेगा इसमें. So this I was talking about. So this is most important. So having said that, if you have taken one slider, for example, not this. This I put it down. This I put it here, for example. So right now you have all month. If you're not selected, is all month. So if I say May, it should automatically, and it has to be at the top. So you must have seen, right? All the, this is called dashboard prompt. Okay. This all is called dashboard prompt. You got it? So whenever people say, मेरे को filter चाहिए, so this technically called dashboard prompt. And this will probably help them to get a complete understanding for which they can do a, kind of a lookup and, criteria. Select all, deselect all. May. Okay, now this is smaller. I need to be a little more bigger. You know why ये बड़ा क्यों होना चाहिए? Have you ever come across why it's too bigger? Even in my also it's bigger. Tell me why. Because that's the overall focus of your dashboard. Okay. Yeah. Total revenue, total item sold. उसके बाद ये सब देखेंगे ना, ये सब नाटक है. Real story इधर है. ठीक है? यहाँ पे दो चीज और डाल सकते हो आप. Profit. Yes. One is your profit बनाए. Profit is there or no? है प्रॉफिट इसमें है ये थिंक अपने डिस्काउंट होगा फिर नहीं डिस्काउंट से काम नहीं चलेगा यूरो रेवेन्यू है हमने बनाया था ना उस दिन हाँ एडिशनल revenue. What else? No, it's not there, but probably you can have order status. Okay, okay, we can put it at discount for timing. Where is the discount?
Category, where is the discount I saw? सर्च में आ जाएगा डिस्काउंट. Not this. So if it is discount, what you could do, one thing here is go to the here. And you should show into percentage. Then you have to do calculation, man. यहाँ पे percentage we can show, right? Do you remember? मैं था क्या फॉर्मेटिंग में था या वो एक्सेस में वाले में. Access में भी नहीं होएगा. Let me see. I can show value as percentage of grand total. ये 100% दिखा रहा है पूरा. No calculation, weight and variance, count, distinct. नहीं DAX पर आना पड़ेगा दोस्त. टोटल ही दिख रहा है ना, तो टोटल का टोटल ही दिखेगा ना, सो इट Total विल ऑलवेज बी grand total 100%. 100 ही हुआ ना. Okay. So basically what we need to do is, so you probably have to get this done, the maximum values which you want to show them. Okay, तो ये यहाँ पे, this is not, you have to write something like this, discount value. Not that percentage. Correct? So out of this, this sold, this is the euro in revenue. Okay, one thing I want to tell you, whether you know or not, I'm sure you must be knowing it, but yes, if you can select this all, get into the format, then you have alignment. You guys aware? No, I was not. Horizontally distributed. You got it? But what change happened? Not seen. अच्छा ठीक है, मैं दिखाता हूँ. एक इधर रखता हूँ, हाँ, okay. So it is इधर putting in the same line. कर देता हूँ, एक उस पे डाल देता हूँ. ठीक है, अभी मैं इसको select करके I'll go to the format. I'll say align, distribute horizontally. ठीक है, but ये this is not coming up time. What I'll do? I'll say line middle. Okay. Okay. How does it know कि middle is of this? मतलब एक group में रहेगा तो हो नहीं नहीं, middle of horizontal, the middle vertical, not horizontal. ये horizontal, ये देखिए ना, see that arrow. Fine, this is horizontal, this is vertical. Okay. You can make a group here in case if you want to make it a group. अभी किधर भी जाओगे ये group रहेगा. Nice. Okay, ये क्यों करते पता है? ये within the group है. आपको मतलब आपका चारों अपने नीचे डाले, आपको कार्ड्स ऊपर शिफ्ट करने तो एज अ ग्रुप शिफ्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग शिफ्ट सिलेक्ट ऑल एंड. Okay. So that was a formatting which I think you should know. Forward and backward, ये भी पता होगा आपको, right? You want to see something front, something back, like a word. Word में क्या होगा ना आपने ऐसा. Okay. So before we go, I'll have 1 hour time. So 1 hour, I think we can go for modeling. Okay. Before we go modeling, let me show you the hierarchies. Okay. So that you can do practice. अभी break होगा, उसके बाद practice कर सकते हैं थोड़ा सा. Now let's see, where's the product category?
So you want to see the sales? इसको cancel मत करो. Let it be here. Guys, we have a category name and product should be within the category, correct? Yes. Okay. Now if you can see here, order date is year, month, quarter. See that hierarchy is there, right? Yeah, yeah. So go to your this and I'll go for the category. Right? Can I say create hierarchy? Can you see that? Yeah. So you can very much name it in case if you want. You will say products or product hierarchy. Or simply write products in case you want. Fine. Now if you can see the product, right now you have only category name. What you want? You also want a product name. Okay. Click here. This is a product name, right? You can see. Wait a minute. Product name is clustered. Product name चाहिए आपको, sorry. So you can either Add to चाहिए था ना hierarchy. give me a minute. ये कौन सा है product and product? Oh, category name. दूसरा टेबल में मे भी नहीं कर सकते होंगे मे भी. नहीं कर सकते. That is that. You can very much drag and drop. No issue. If they have a join, you can. Okay. Product and products joined है कि नहीं? I have to see that. Wait a minute. You already have category name here. Why do you need this place? This is wrong. This you remove it. You understand? So you will create it there itself. You already have category name there, right? You will add product name to that. Yeah, so category name, either you can simply drag and drop. But this is the calculated column, I believe, Mark. This looks like an all calculated column. Okay. See, add to hierarchy. तो हमने जो hierarchy बनाया है अभी. Where is the hierarchy? Okay, so we have products. You can do product category and product name आ गया ना? Let's go here and let me have what do you call? Let me have one slider. No issue. I can create one slider, and this slider would have category and product. Clear? Where is that? Which one we have, man? Let me out. Second one below brand ID, no? That you created hierarchy. ये Products वाला and products, second table, second. तो ताकि मैं इधर डाल देता हूँ. दिखा क्या? हाँ. Category. Understood? हाँ. Cluster 1 क्यों आया? Category होएगा ना? These are three categories यार. हाँ. आप इसको हटा दो. प्रोडक्ट नेम को अभी कैटेगरी क्या दिख रहा है? ये तीन दिख रहा है ना? You understood? Yeah, but I thought कि ये अभी आप कैटेगरी के अंदर ही प्रोडक्ट्स है ना, तो वो क्लस्टर 1 के बदले कैटेगरी नेम आना चाहिए था ना.
नहीं तो कैटेगरी नेम ही आ रहा ना, क्लस्टर में से कैटेगरी नेम आई अच्छा, डिफरेंट, that is classed. Okay. डेट है ना बाबा। Okay. 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 Got it. इधर क्या है, ये दिख रहा है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। ये रहा ना। हम्म। तो जो डेटा दिखेगा वही आपको बताएगा, वो ज्वाइन रहेगा आपको। So do one thing, I'll probably go here and we have a date. Which date? Where we have a date? Sales order, right? Yeah, shipping date and all that. Shipping date है ना। Now here then I don't want day level. I want shipping quarter, day and quarter. So I'll create a new hierarchy. Fine. And I'll put the name. Shipping. Year, quarter. Okay. So here what you have, we have a date. So you got to complete it right now. If you have to take year and quarter, so probably I have to get new measure. I don't think so you'll get it here. Then you have to create a DAX for a year. एक निकालना पड़ेगा, quarter निकालना पड़ेगा. You got the point? इस date का वो डायरेक्टली ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या, मतलब ईयर से? इधर नहीं है, इधर by default दिखेगा आपको. But if you want to create your manually hierarchy for date, you have to have your quarter, month, year as separate columns. You have to take it out. Fine. That I'll tell you later. Now, when we create this hierarchy, this will show in data model, or will it show also in this? It's a data model only, no? Okay. This is a data model. Right now, when I create a hierarchy, where I created product, right? This is a data model only, no? It's a metadata, nothing else. There's not actual data. Okay, this is metadata. So we are creating an alias. Metadata, no? Can we go to the model page? उसमें दिखा यहाँ रहा है? पे ऐड, हाँ यहाँ पे हुआ है क्या ऐड? किधर ऐड? किस चीज में ऐड? नहीं, प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स में आपने कैटेगरी नेम या फिर वो ऐड किया था ना, नहीं प्रोडक्ट नेम क्लस्टर्स ऐड किया। Yeah, we have this production categories now. हाँ वो ऐड हो That's the गया। metadata, na? This is not physical. Hierarchy cannot be physical, no? Hierarchy is made only for the column which is already available. Year, quarter, month करते हो ना गोपाल, तो year, quarter, month आपको निकालना पड़ेगा ना पहले. Yes, yes. Yeah. And because here it is already by default. I can't make it from here. Let me help you out. This. Okay, order may you have order. See here you can't get order. Go to the model. So you can see here you can't see. You can see you have to go to the data. Now if I go here and I click this and I want to get this done, can I can only go for, I can't even copy in something, no. See these all will be available. Now here this is already available for me. See, no options. Right? So because of date, it by default it takes up. Fine. So as of now, we will do later on. We will talk about how we will create year and all. वो DAX कल करेंगे. Okay, we just keep in Chinmay, just keep it in mind. We'll create year, quarter, month, and day. Okay. Okay, and then we'll create a hierarchy. So one way we already know the hierarchy how to create. Other way is just give me a minute. Here, if I take product name and drag it to the, It's not dragging. no, because this name is not from the same table here.
This name is coming out. देखो ना, lookup करके मैं लेके आया हूँ कहीं से बाहर से. दिख रहा है ना आपको? Okay. कहीं से कैटेगरी नेम से उठा के लाया हूँ ना. Mm-hmm. इसका वैल्यू वो भी कल बताऊंगा. ये डैक्स, ये सब डैक्स है, ठीक है, इसीलिए वो नहीं हो रहा उधर. So you mean to say that it should be hierarchy value should be available in only one table? No, but you cannot do a calculated value. See, hierarchy is just a logic. Yes. If I already do a calculated column, उसके ऊपर कैसे hierarchy बनाएंगे? Calculated. Hierarchy हमेशा category के ऊपर बनता है, description के ऊपर बनता है, correct? Calculated field not will have. Yes. This is a calculated field, no? अगर एक्चुअली कैलकुलेटेड फील्ड में हो सकता तो यहाँ पे ही हम लोग ईयर क्वार्टर बना देते थे ना, विदाउट यूजिंग डैक्स पे. That is different. That is all for year. But I'm talking about for this category name. Give me 1 minute. Here you have a category name. Fine. So let me go and create one hierarchy. Okay. इसमें क्या है आपके पास? Category name है. Let me go and you have a product name. Product name इसमें नहीं आ रहा है. Okay. Give me a minute. इधर की product ID होगा, product नहीं है. Okay, if I say product name and product ID is just 1 to 1. And that is why you can create hierarchy. I have already created because दोनों एक साथ एक table में है. But I am sure product categories and product master. Oh, they are not linked. I believe them. Delete this. Wait a minute. Let me go to the model. Product category is into products. Production product. Where is the product? Product category and product name. Category. New product name. Logically, they should have a hierarchy. Oh, I understood. So this I took it here, and then I able to create it, right? I referred it, right? Category name. This is the calculated value, right? Okay. And then I've created a product hierarchy. Where is the category name? Here. This I'm doing lookup. Fine. Here I can go and create hierarchy now. Fine. I'll create one more hierarchy. Correct. And then I want to get my product name here. So I can say add to my category name hierarchy. Can you see that? So that's what within You should table. have a same table. Same actually. table, yeah. Then only You there can is. refer it. You can do a condition column also. Hey guys, give me 5 minutes, man. I need to join my office call. 12 o'clock now. Okay, we'll catch up after the break. Okay. Okay, sure. You guys can create the hierarchy and just see. Okay. Except Yeah, the sure.
हेलो हर्षल, हर्षल इधर। हाँ गोपाल बोलिए ना। अरे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। हाँ, पकड़ो। हाँ ये स्टॉप करूंगा, स्क्रीन शेयरिंग हो जाएगा ना? ओके है ना? हाँ हाँ अरे मुझे मैप्स में प्रॉब्लम आ रहा है। जस्ट शेयर माय स्क्रीन। सी अभी यहाँ पर मैप्स बनाया। ओके, आई हैव क्रिएटेड हायरार्की, कंट्री हायरार्की, कंट्री, स्टेट एंड सिटी। ओके ठीक है, लेट्स सी। If you look data, it's only United States of America, right? किधर जाता है वो, कैसे आता है वो वापस? बट इसमें भी आ रहा है डेटा। If you click one of them and say drill up, goes to USA. गोपाल वही होगा वो कि आपने जैसे पूछा था ना, जब भी ये हम लोग जीआईएस से मैपिंग करते हैं ना, तो उनके पास पे एक मैपिंग रहता है। पर अगर आप स्टेट पे हो तो वो स्टेट अगर नेम किधर भी और जगह पे कहाँ पे लाया होता रहेगा ना, तो वो सब जगह पे ढूंढने दिखेगा, या फिर सिटी भी। तो 1:1 चेक कर या रहा है। तो फिर आपको ये फील्ड मैप है ना लॉन्गिट्यूड अपना। लैटिट्यूड करना ही पड़ेगा ना? हाँ करेक्ट करेक्ट, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड रहना चाहिए। या फिर नहीं, क्योंकि हमने हायरार्की बनाया, देन इट शुड वर्क ना विद यूनाइटेड स्टेट्स ओनली। मेरा ये कहने का मतलब था। ओके वो सही है, पर भाई कंट्री और स्टेट में अभी हायरार्की आपने बना दिया। दूसरा वही आप टेबल में फॉर्म में देखिए ना कैसे दिख रहा है, सेम चीज को। ये हाँ सेम, ये इसको जो हायरार्की आपने बनाया ना, कंट्री स्टेट, तो स्टेबल है तो सेपरेट, सिटी में दिखा रहा है। सेपरेट पेज पे। नहीं ये नीचे दिखा रहा है ना, सिटी एंड प्रॉफिट शिपिंग कॉस्ट। ये सिटी पर ही ले रहा है, अच्छा इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स। वो सिटी पर ही ले रहा है, तो ऐसा नहीं हो कंट्री रहा पर है वहाँ नहीं। पे। अच्छा कंट्री पर होना चाहिए उसको। नहीं नहीं गोपाल, इसको कॉपी पेस्ट कीजिए ना सेपरेट पेज पे, उस पे देखते हैं ना, वहाँ पे टेबल फॉर्म में देखते हैं इसको कैसे दिख रहा है। हाँ ये तो इसमें फॉर्म में रहेगा, पर उसके अंदर सेपरेट पेज पे बना के देख सकते हैं क्या, आइडिया आ जाएगा थोड़ा अच्छे से। नहीं, अभी देखो ये बना मैंने हायरार्की, कंट्री दिस इज ओके। फिर गो ऑन स्टेट तो ठीक है। एक्चुअली हाँ, ये क्यों नहीं दिखा रहा है? दिस इज कैलिफोर्निया, ये होना चाहिए ना शिफ्ट। ये भी शिफ्ट नहीं हो रहा। डेटा यहाँ पर आना चाहिए था, वो शिफ्ट नहीं तो होना वो चाहिए। मैपिंग ही बराबर नहीं हुआ है अपेरेंटली, या तो फिर आप जब भी स्टेट पे क्लिक करते तो उस हिसाब से आना चाहिए था। अरे ये तो मैंने पूरा डिलीट ही कर दिया। अरे वो पता नहीं चलता है पावर बीआई पे, कभी कभी मेरे भी काफी बार ऐसा हुआ था, तो वो बार बार सेव करना पड़ता है। I just put country hierarchy, हाँ ठीक है। लेट्स सी, सेल्स का ये भाई प्रॉफिट डाल देते हैं। बबल साइज भी तो चाहिए। यही इशू है। ओके, मैप नहीं हो रहा है मतलब। हाँ एक लेवल नीचे जाके स्टेट में तो आ रहा है क्या? हाँ, स्टेट में आ रहा है, स्टेट में इट इज वर्किंग परफेक्टली। सी हायरार्की बनाया, देन इट शुड बी इन दिस मैप। ठीक है, देखते हैं, क्वेश्चन से पूछेंगे। बराबर है, ऐसा होना चाहिए था। हायरार्की नहीं बनाते तो फिर सेंस बनता है कि वो कंट्री है फिर स्टेट सब जगह पे ढूंढ रहा है। हाँ मुझे तो डाउट आ रहा है वो कंट्री भी समझ पा रहा है क्या यूएस है, अगर वो ही समझ नहीं पा रहा है तो फिर वो। नहीं, वो तो समझ रहा है ना, क्योंकि फिर यूएस के अंदर ही मैपिंग किया है सारा नहीं स्टेट्स फिर पर। वैसा रहता तो मतलब बाहर हम का लेवल पे बताना ही नहीं चाहिए था ना, आप सिर्फ कंट्री भी अगर सिर्फ डालते हो
सिर्फ कंट्री विदाउट हायरार्की, तो वो बराबर यूएसए पकड़ता है क्या? सिर्फ कंट्री रहेगा तो? हाँ, कंट्री है तो यूएसए पकड़ता है। और कहाँ पे किधर भी टिक मार्क नहीं आ रहा है ना? नहीं, फिर और कहीं नहीं तो फिर आता। आना चाहिए था, फिर आपने बोल रहे हो वैसे। फिर यूएसए दिखाता है कंट्री पे जाएंगे तो। स्टेट हम्म। पे जाते तो यहाँ दिखाता है, स्टेट पर भी नहीं दिखाता है। जब सिटी लेवल पे जाते हैं ना तब वो दिखाता है। अच्छा, स्टेट पे भी नहीं सिटी बता लेवल रहा पे था? जाएंगे तो सब दिखाता है। नहीं स्टेट, नहीं, स्टेट पे भी नहीं दिखाता है। पूछना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है, ठीक है, करो काम, करो काम करो।
Guys, everybody, Gopal team. Hi there, I'm here. Am I audible? Yeah. We are Yes. I'm also. Okay. Yes, yes. Hierarchy बना लिया ना? क्या? You've created hierarchy, right? Yes, yes. अच्छा ठीक है. Sorry. So we'll go here. So tomorrow के लिए what I'm thinking, can we catch both things tomorrow's call, whereas we'll talk about one is DAX and also the data, their data modeling. You still have half an hour. Would you be able to cover the data modeling in half an hour? I don't think so. Okay, so tell me, Gopal, क्या बोल रहे हैं? नहीं, we should do it tomorrow. The data modeling might be. नहीं, data modeling जो example से वो छोटा है. Remember that sheet I've given you? Yeah, which one? I don't वही remember. data model. Data sheet, Okay. rank values and all. Let me show you the sample data. This data you should have been there, right? You already seen before. This one. Yeah, okay. तो ये छोटा है ना. Let's do it. ये आधे घंटे में हो जाएगा. Yeah. So what you guys have to share a screen and you have to do one by one. I'm gonna help you. Okay. So anybody, Gopal or Chinmay. So it's few steps, not much. Harshan, can you share? Harshan? Hello, sorry, I will share. And Jagrati, from tomorrow you should be in laptop. Mobile पे नहीं चलेगा, please. Yeah. So should I close this project and import new project? हाँ, आप एक new कर लीजिए. Quickly. Import that sheet. Thank you. Great data. Which one was it? Data transform experience. No. I think we will have to do some transform. I want you guys to do. I'm sitting here, so I can help you out. You importing the same one, right? Ashal. Harshal, are you mute? Unmute, please. Yes. Sorry. Data में जाइए. First of all, model में जाइए. कुछ है क्या? Relationship. Nothing. ठीक है. Wait करो. मॉडल में जाइए. ठीक है. क्या क्या करना है? सबसे फर्स्ट थिंग
Remove the Okay, empty spaces. PPT खोलो बाबा, PPT खोलो. I've given you PPT. Everything is planned, just you have to do. Presentations, audio. Second. ठीक है, सबसे पहले आप टेबल नेम चेंज करेंगे. Yeah. Employees. ठीक है ना? हाँ, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो निकालना है. It is not ये part of- अभी you just follow the sheet. Let's go next. Then import data. Hmm. Change table name. हाँ, अभी ये हो गया change table name. Remove the Change all. first row. No, change all table names. Remove the first name. Right click करो. Go there. Okay, hang on. See here, if you can see that, right click करेंगे आप blank space पे पकड़िए. Blank space को right click कीजिए. हाँ, वहाँ right click कीजिए. ठीक है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है. Rename, delete. Hide the report. No, delete. 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 नीचे जाइए. या कॉलम में डिलीट कैंसिल कीजिए. कॉलम में डिलीट कर रहे हैं. मैं उस पे क्लिक करके राइट क्लिक कर रहा हूँ. नहीं, don't delete a column. Don't delete a column. See, the best thing is आप एक काम करो, आप इसको कैंसिल करो. You're not in this tool. You're in sheet. You're not in tool. You're in sheet, sir. Query editor में नहीं हो आप. Go back to the first one. Yeah, click कीजिए वहाँ पे. वहाँ जाइए data model, transform data. Top में. Transform data. Yes. Transform data. Yes. You got it? आप एडिटर में नहीं थे आप. अभी समझ में आया? हाँ, ये नल कैसे वाले. पता चलता है? वेट कैसे पता चलता है एडिटर में नहीं है? राइट साइड में देखिए अप्लाइड स्टेप्स दिख रहा है. Apply step. हाँ. आपने चेंज नेम किया था. वो डायरेक्ट मैंने मॉडल में किया. हाँ, तभी तो ठीक है. अभी आप लेफ्ट साइड. वेट अ मिनट. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. सी, you follow me. If you see the box, small box, first name के पहले, click that. Now wait, hang on there. This is a table label property, okay? Whatever you're gonna impact, you're gonna be table label. अब इसमें देखिए क्या है. आपको फर्स्ट रो ऑलरेडी किया हुआ है. ऐड कॉलम, फर्स्ट रो ऑलरेडी है. फाइन. Remove top rows, remove bottom rows, remove duplicates, remove errors. Can you go down? Top row remove करना है. टॉप रो नहीं रिमूव करना है. टॉप रो मतलब ये हेडिंग वाला रो नहीं रे बाबा, वो तो हेडिंग हो गया. रिमूव टॉप रो. नंबर ऑफ रो 1. क्या हुआ? गया? तो नल वाला चला गया. वही बोल रहा हूँ. ठीक है, अभी एक मिनट वेट करो, जल्दी मत करो. आप इसको पहले अपनी ऊपर अप्लाई में क्लिक किया हो ना, सिर्फ अप्लाई कर दो. डोंट क्लोज इट. लेफ्ट साइड कॉर्नर, क्लिक, अप्लाई, ओनली अप्लाई. ओके, अब आप मेरे पीपीटी में जाओ. सो रिमूव फर्स्ट रो हो गया. ठीक है, देख लीजिए ऊपर में भी एक ऑप्शन आता है. वेट. There's an option from remove top rows. Number of rows 1 दे दिया. क्लियर हो गया? हाँ. अभी और फॉलो करो. नेक्स्ट में क्या लिखा है? अभी रिप्लेस नल वैल्यू. अपना क्या करेंगे? अब नल वैल्यू को, किसी भी नल वैल्यू को सिलेक्ट करो. Guys, everybody looking in right? Yeah. Right click. रिप्लेस Replace वाली. आपको नल को किसमें करना है? गो टू पीपीटी.
पीपीटी में क्या लिखा है? Null to what? Okay. Go down. 0. ठीक है, अभी कई जगह नल और भी है। इधर भी 0 करो। रिप्लेस ऑल करके कुछ होता है, देखिए ऑप्शन में जाइए, एडवांस ऑप्शन, Replace using specified. रिप्लेस मैच इंटायर सेल। हेलो, कर दो। Okay. ये नहीं जा रहे। It is taking column wise. Okay. एंटायर टेबल को नहीं कर सकते हम रिप्लेस एंड नल। सिलेक्ट कैसे देना? नहीं ना, उसमें रिप्लेस वैल्यूज में एंटायर टेबल सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। रिप्लेस कॉलम्स। एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सिलेक्ट एक ही रिप्लेस हो रहा है, साइड वाला नहीं हो रहा। Only column wise replace हो रहा है। एक काम करो ना, कंट्रोल ए करके पूरा सिलेक्ट करो ना, पूरा डेटा। हाँ, किया। नहीं हो रहा है ट्रांसफॉर्म में फिर जाओ, नहीं फिर ऊपर ट्रांसफॉर्म में जाओ, ट्रांसफॉर्म में सबसे ऊपर होम के ऊपर ट्रांसफॉर्म, हाँ वहाँ पर रिप्लेस वैल्यू, थर्ड कॉलम। हाँ अभी देखो यहाँ हो रहा है क्या? हाँ नहीं गए। ये वाले रोज रिमूव कर दो। कौन से? यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट, रिमूव अननेसेसरी रोज दिया है ना उसमें। ये वाला रिमूव करना और ये वाला remove। एक टाइम पे एक ही रो रिमूव करो। नहीं, पीपीटी देखो, पीपीटी। We want to remove all unnecessary rows to make data. Select the first column, drop down and left click. Drop down, left click. Left click. Select data. You select all the items you don't want. Choose columns. Select
select the first column and drop down. Arshal, first name को choose कर. First name will deselect all the options you don't want in the data set. लेकिन वो ये मिल नहीं रहा है, ये किधर से आ रहा है? फिल्टर में फिल्टर. Drop down. वो जो drop down है ना. Let's all. 0 ना. अपने filter कर दिया, remove नहीं किया. क्या भाई कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? हर्षल पीपीटी के बाद भी चीटिंग नहीं कर पा रहे हो यार. हाँ? पीपीटी दे दिया बना के चीटिंग नहीं कर रहे. गोपाल कैसे चलेगा रे? सब कुछ दिया, चीटिंग नहीं कर पा रहे. ये देखो ये 0 वाले हाइड हो गए या रिमूव करने हैं. Remove हाइड करना करना है. है, रिमूव करना है. हाँ ठीक है ना, अनसेलेक्टेड है क्या? ठीक तो है, क्या करना है? तो बोला वो रिमूव करना है, हाइड करना है, रिमूव करना है. कौन सा 0? ये वाला सेट. पहले ऐसे था. पहले हाँ ठीक है. अब मेरा ये हाँ अनसेलेक्ट कर 0 दीजिए, हो गया. हो गया. ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? अच्छा इसको सेव कर रहे हो यार, सेव करते जाओ. अप्लाई वाला बटन. अप्लाई, हाँ सिर्फ अप्लाई कर दो. ओके, वन थिंग, लुकिंग एट द स्टेप्स, पीछे जाइए, गो बैक, not here. See the applied steps here. Team, everybody, Gaurav and Gopal and all. If you want to remove one of them, it will impact back to your data. Okay. Yeah, got it. Okay. Undo type. Okay. What next? Replace हो गया. Remove unnecessary rows. Remove. Unnecessary rows हो गया. What next? Remove unnecessary rows. हो गया ना? वही same. Double click Rename column heading. column header change कर सकते हैं, कर लीजिए. Employee code. हम लोग डेटा मॉडलिंग कर रहे हैं, DAX नहीं. ओके, बी रिमेंबर, DAX is not a part of data modeling, though it's a part of it, but mostly हम लोग पहले डेटा मॉडलिंग कर रहे हैं. ठीक है, अभी बताओ बताओ. Employee abbreviation को employee code. नेक्स्ट, सेपरेटिंग, Separate into two codes. स्प्लिट करना है आपने. आपके पास एम्प्लॉय आईडी है ना, एम्प्लॉय हाँ, नेम ये है और एम्प्लॉय आईडी भी है. हाँ, राइट क्लिक कीजिए, स्प्लिट करके आया कुछ. Split column. हाँ, बाय डेलीमीटर. नहीं बाय डेलीमीटर करो ना, उसमें कस्टम में जाओ. कस्टम, हाँ ठीक है, सही आ रहा है. ब्रैकेट, ठीक है. ओके करो. ले लिया उसने. तो ये ब्रैकेट निकालना पड़ेगा. वो अपने को ब्रैकेट लेना था. चलो कोई नहीं, इसको भी उड़ा दो. तो रिप्लेस में जाओ. Replace value. हाँ ब्रैकेट. वो अरे बाबा, उसको क्यों कर रहे हो? कैंसिल करो, कैंसिल. राइट क्लिक. Replace value. हाँ नीचे जाओ. हाँ, वैल्यू टू फाइंड एंड रिप्लेस. सो सिर्फ ब्रैकेट फाइंड करो ना, सिर्फ ब्रैकेट. हाँ, मैंने वही किया था. अच्छा सॉरी. With replace with. Okay. एक्सेल शीट जैसा लग रहा है ना? Okay. ठीक है, व्हाट एल्स? सेपरेटिंग टू कॉलम्स हो गया. मर्ज कर लो, दो कॉलम मर्ज भी करने के लिए कह रहा है. कौन सा कॉलम First मर्ज name और last name मर्ज करो? Employee ID और employee code उसको मर्ज करो. नहीं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करो ना, एम्प्लॉय आईडी छोड़ो. दोनों सेलेक्ट करो. हाँ, राइट क्लिक करो. ठीक है, मर्ज कॉलम लिख दो यहाँ पे. स्पेस. नाम तो लिखो, फुल नेम, एम्प्लॉय नेम.
आ गया लास्ट नेम 2 आएगा, है? यहाँ पे लास्ट नेम 2 आया। पहले से है, वो पहले से है, एम्प्लॉय कोड लिखो, एम्प्लॉय आईडी लिखो, कुछ भी लिखो, हो गया ना? और देखो राइट में जाके देखो फर्स्ट नेम लास्ट में रखा है या उड़ गया, ये कंबाइन हो गया। अच्छा मर्ज कर दिया ना अपन ने, मर्ज किया। ठीक है सेव करो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से जाके वेट हाँ ओके, आप उसमें जाके देखिए क्या नाम है शीट में जाए, और क्या बचा एम्प्लॉय है? आईडी और एम्प्लॉय कोड भी मर्ज किया। नहीं ठीक है, अनपीओड करना है आपको। अगर रिजल्ट अनपीओड किस में कर रहे हैं? ईस्ट में ईस्ट में क्या है? अनपीओड करना है। अनपिवोट मतलब क्या होता है? करो सर, पिवोटिंग कॉलम्स, अनपीओटिंग Unpivot करो। ईस्ट को अलग कर दिया ना सिर्फ, हाँ। उसमें वैल्यू भी था ना। हाँ, रिमूव करके देख क्या होगा। ईस्ट में वैल्यू था ना, हाँ, ये ईस्ट रहा वेस्ट है। नॉर्थ साउथ ऐसा करके आपको चाहिए ना डेटा हर रो में। ये पिवोटिंग है, मतलब वैल्यू के साथ है। अनपिवोटिंग में सिर्फ कॉलम देगा। अगर आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखना है काउंट करके, कैसे करेंगे? कॉलम आना चाहिए ना। मेरे को लगता है ये अलग टेबल ही बनेगा ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला रीजन। टेबल नहीं रे पापा, कॉलम। आप नहीं समझे, अब अनपिवट करो। अभी देखो ये ईस्ट अब के यहाँ दिख पे रहा है। ईस्ट आ गया। हाँ, और इसका डेटा किधर गया? वैल्यू इधर आ गई। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, ईस्ट का वैल्यू वेस्ट का वैल्यू ऐसा करके। बट यू कैन रिमूव इट इफ यू डोंट वांट। कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, अनपिवोट। और क्या है इसमें पीपीटी में? चेंज डेटा टाइप। दैट यू नो राइट हाउ टू डू इट। राइट क्लिक कीजिए या ये वाला हाँ न्यूमेरिक फिल्टर, और टॉप में क्लिक कीजिए ना, वहां नहीं। हाँ चेंज टाइप उस ट्रांसफॉर्म के ऊपर, उसके नीचे। हाँ नंबर कीजिए, फिक्स नंबर, फिक्स डेसिमल नंबर। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, अप्लाई कर दीजिए, सबको अप्लाई करते, सेव कर दीजिए। अप्लाई। Now you close it. Now you go to data. ये आपको स्टैंडर्ड दिख रहा है डेटा? हाँ। So this is a data modeling. रिलेशनशिप में चाहिए कुछ? ये वाला टेबल का भी डेटा मॉडल करना पड़ेगा। एक मिनट, डेट का और हायरार्कीज, अब दोनों टेबल को कंबाइन भी कर सकते हो। I don't think you need a simple data. कंट्री रीजन ये इसमें किसमें है? टेरिटरी। अब ये कैसे रीजन और ये वाला मेरे को लगता है मैप होगा, रीजन नेम। बट टू एम्प्लॉय रिलेटेड है क्या उससे? एम्प्लॉय डेटा में जाके चेक कीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना बाबा, इसीलिए उसने अनपिवटिंग किया था माय डियर फ्रेंड। अनपिवट किया था ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हाँ हाँ समझा हाँ। क्या? तो चलो करो ठीक क्या है, ऑफिस? हाँ वो उसको अनपिवटिंग करो। गोपाल, ऑल वेल नाउ? Let's see.
looks like. Don't say all C यार, इतना मेहनत करने के बाद तुम्हें ये statement दोगे आप मुझे all C. Yes, ठीक है, let them do it. Okay, you guys carry on. I'll be actually completing this other stuff. आज मुझे 2 प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट प्लान बनाना है, 2 प्रोजेक्ट वाले परेशान कर रखे. So you guys carry on, finish it, and then we'll have more discussion tomorrow. कल हम DAX करेंगे. Okay. Everybody, Gopal, can you please make sure that people can do the same exercise? Yeah. ठीक है, चलेगा. You can No, have but- this recording. Yeah. Please do your recording. ये east, west, north, south ले आइए ताकि वो join करना easy पड़ेगा. Join हो जाएगा. Remember? No, but it has to come in one column only, ना. ये तो सब अलग-अलग column हो रहा है. When we are doing unpivot, it is going in different columns. ये तो और बन गया. डेटा तो रहेगा ना. ठीक तो है वो. कहाँ गलत है? It should come. It should stack. This is not A stacking. is इधर आना चाहिए और उसका वैल्यू ऐसा होना चाहिए ना. East, west, north, south should stack. वो तो ऑलरेडी है ना आपके पास. This is row wise. वो तो सेम ही हो गया डेटा जो पहले था. नहीं, सेम कैसे हो गया? आपका हर रो में अलग अलग था, राइट? आप उसको ज्वाइन कैसे करोगे बिना कॉलम के? Unless it is stacked, we can't join it. You can still do that. ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन चेक कीजिए. See, you have a other column. Undo कीजिए पहले unpivoting चारों. Undo कीजिए. Yes. Okay. Now आपके पास ऑलरेडी है ये. So north, south. Wait a minute. You asked me one thing. You don't have to do anything now. Go to the relationship. Close this. Only close. ठीक है. Relationship. एक रीजन ने 4 इसके साथ कैसे मैप होगा? इधर साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट. ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा. We have to put it into one column. North, south. Wait a minute. This is the same we did, no? उसने क्या किया है? इसमें इधर पिवट नीचे जाओ, ऊपर क्यों जा रहे हो? Go down. सेम डेटा टाइप कर दिया, अपेंड क्वेरी. Go down here. They did the same thing, no? North. January, इसने January से रेट लिया. Okay, they are doing actually January, February, they are appending table. ये तो कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा. This I'll tell you the VLOOKUP के through. I mean lookup. We'll do lookup. So what they've done is they have wait. So ये जो north दिख रहा है ना region name. So they connecting with this your what call country. ठीक है, ये 2 पॉइंट छोड़ दीजिए. I'll put it from the lookup. मैं कंडीशन के थ्रू नहीं, लुकअप के थ्रू, DAX के थ्रू लेके आऊंगा.
We just leave it as it is. इसके साथ आप जो भी play करना है कर लीजिए and date dimension बना लीजिए. You have a dimension hierarchy, right? Okay. Yeah, you create that and you leave it. So you have month, quarter and year. Hierarchy बना लेंगे ना? Hierarchy यहाँ से नहीं बनेगा सर, एक query editor है, model में चाहिए. So all these three tables should be merged together to make one table. Yeah, that you can make it. फिलहाल ये date में merge मत कीजिए. Only you create the hierarchy and you create a dashboard. That's it. Rest will take it tomorrow. Okay. Yeah. निकालोगी तुम ना यार. क्या करना है? इसको रीनेम करो. Gopal, I'll be pushing off. You please carry on and then probably we can catch it tomorrow for more. Sure. Okay.